अभी मॉर्निंग। अनूप सर ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मैं सेंटर से ज्वाइन किया हूँ। तो आपको कुछ डाउट्स है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं MSCIS प्रोग्राम को लेके या PGDIS जिनका भी होगा। सर मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने असाइनमेंट ट्यूसडे को सबमिट की है। हाँ हाँ, तो मैं कोई प्रॉब्लम असाइनमेंट। नहीं। ठीक है कहाँ सर। पे आपने सबमिट किया, मेरिट के साइट में जाके? सर ऑनलाइन जो फॉर्म दिखा रहा था वहाँ पे, लिंक पे, गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म मेरिट 07162 लिखा हुआ था यस। ना उसमें? यस यस, हाँ वहीं से डाउनलोड किया था, यस। वहीं हाँ पे हाँ, था। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बाकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ बता देता हूँ जब तक अनूप सर ज्वाइन नहीं करते। हम्म। आप ये देख लेना। मेरिट के साइट में आप जा सकते हैं, उसमें जाके आपका इंडक्शन में आप ज्वाइन नहीं किए थे ना? नो सर। इंडक्शन के लिए आपको मेल नहीं आया होगा नहीं क्योंकि नहीं सर। उनका पहले, बहुत पहले हुआ था। आपका बाद में हो रहा है। हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन क्लास रखेंगे। बाकी अगर आप किसी दिन ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं, सैटरडे संडे को आफ्टरनून में आ सकते हैं। आपका क्लास नहीं है ना, तो उसमें हम ऑफलाइन में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ग्रुप बना लीजिए एक, उसमें मुझे ऐड कर दीजिए। बाकी जो इश्यूज रहेगा डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो। क्योंकि श्योर जो सर। आपका थ्योरी सेशन है, मेरे ख्याल से RC कोचिंग कराएगा ऐसे सुनने के लिए मिला था, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया है। पहले जो कोर्स MSCIS PGDIS का कोर्स चल रहा था, जिस कोर्स में इग्नू का 200 से कम एनरोल होते हैं स्टूडेंट, तो वो नोडल सेंटर चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम MCA का ऑल ओवर इंडिया का यहीं से हैंडल कर रहे हैं। तो आपका MSCIS में जो भी आपका डाउट्स रहेगा, आप जो अनूप सर का क्लास आप ले लीजिए। वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, आपको सारे बता देंगे। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप 2 बजे ऑफलाइन मोड पे आके क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, संडे को 2 बजे आप आ जाइएगा श्योर बात सर। करके। तो श्योर। आप अभी एक ग्रुप बना लीजिए। आप जितने लोग एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रुप बना दीजिए। फिर उस ग्रुप में मैं जो बच्चे एनरोल्ड हुए हैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें से फिर आप कर सकते हैं। मेरिट के साइट ये स्क्रीन शेयर हो गया, आपको दिख रहा है? मेरिट का साइट अभी मैं शो कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस यस सर। यस हाँ, सर। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी का इसमें दिया हुआ है। आप देख लीजिए, ये ई बुक्स वगैरह दिया हुआ है। आप यहीं से डाउनलोड किए होंगे, मैं भी अटैच करके आपको भेजा था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका सेकेंड सेमिस्टर जब होगा उसमें MSEP 28 प्रोजेक्ट है। तो अभी जैसे आप क्लास अटेंड करोगे, फिर जब संडे को आओगे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा, सो दैट आपको नेक्स्ट अप्रैल मई लास्ट तक, 30 मई तक सिनॉप्सिस जमा करना होगा। ठीक है, 30 मई 2026 में इग्नू का वेबसाइट में भी थोड़ा पहले का डेट होगा, लेकिन 30 मई तक प्रोजेक्ट सबमिट कर लेना। दूसरा चीज़ है कि जो आपका क्लास में डिस्कशन होता है वो अच्छी तरीके से घर में थोड़ा एक बार पढ़ लेना। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, बेसिकली टूल्स आपको सीखना है। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स सीखना है। टीचर्स जो क्लास लेंगे उनसे डिस्कस कर लेना, नहीं तो संडे आओगे डिस्कशन कर लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम प्रिपरेशन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का करा दूंगा मैं। बाकी इसमें मेरिट का वेबसाइट में जो आपका यूट्यूब का लिंक है, तो यूट्यूब का जो लिंक है इसमें जाके आप देख सकते हो। यूट्यूब आप ओपन कर लेना। यूट्यूब में जाने के बाद आप मेरिट मेरिट@07162 टाइप कर लेना। ठीक है, तो ये मेरिट का यूट्यूब का चैनल है, जो प्रीवियस सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो कुछ अवेलेबल होगा MSCIS का। तो अनूप सर का आप सर्च करके देख सकते हो ऐसे। इसमें सब MCA का लिखा हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ वीडियोस है। ये आपका इंडक्शन मीटिंग का हमारा जो हुआ था MCA BCA का, ये BCA न्यू का इंडक्शन हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये MSCIS है ना,
ये देखो, इसमें देख लेना, MSCIS PGDIS लिखा है ना, जान टू जून 2025 का प्रीवियस सेशन का है। तो ये भी एक है, MSCGI है, ये भी अनूप सर का है। अनूप सर आपका क्लास लेंगे। आपको ये वीडियोस दिख रहे हैं? यस सर, यस यस सर, सर। वी कैन सी यू। ये सारे सेशन का वीडियो ऐसे अपलोड है, आप क्लिक करके ओपन कर लेना। तो ठीक इसमें है सर। आपको जो भी डाउट्स रहेगा ना, वो सब टीचर्स। ठीक है। तो ये क्लास का वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेना सर। आज तो क्लास लेंगे, पहले से अगर आप प्रिपेयर होके आओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और रेगुलर, हाँ सर ये बताइए। असाइनमेंट का मार्क्स कब तक अपडेट हो जाएंगे ये? असाइनमेंट का जो मार्क्स है, अभी देखिए डेट तो एक्सटेंड नहीं हुआ है, ऑफिशियली नहीं आया है। मुझे लगता है कि 30 नवंबर तक वो सबमिशन का लास्ट डेट जाएगा। तो आफ्टर 30 नवंबर जो है वो इवालुएटर के पास जाएगा। आपका अपडेट होते होते फरवरी फर्स्ट वीक में आपको सबमिशन स्टेटस में दिख जाएगा। श्योर। ठीक है। और कुछ डाउट कोई पूछना चाहते हैं? नहीं। सर ये मेरा ना जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था, इसमें हाँ। प्रैक्टिकल ऑप्शन चूज नहीं कर पाया था मैं, तो वो आइडिया नहीं था क्योंकि वो प्रोग्राम गाइड में सिर्फ थ्योरी का एग्जाम दिखा रहा था पूरा एक। नहीं, उसमें लिखा है ना कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट में। जी जी, वो उसमें तो लिखा हुआ था। तो मैंने हम्म। क्रॉस चेक किया सर प्रोग्राम गाइड से, तो उसमें सिर्फ वो थ्योरी रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने सिर्फ थ्योरी ऑप्ट कर दिया आपकी बार चारों पेपर। तो ओके। क्या सर फिर वो प्रैक्टिकल जो बचा फिर अब जून में दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हो। तो ओके सर, नेक्स्ट टाइम फिर वो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल फिल कर देंगे, वो शो करेगा उस पे कि इसका प्रैक्टिकल बचा हुआ है तब तक। हाँ हाँ हाँ, शो करेगा, आप दे सकते हैं। इग्नू में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आप सर। अगर इस बार नहीं दे पाए, नेक्स्ट टाइम सारे प्रैक्टिकल दे सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका प्रोजेक्ट जो है। तो ठीक है सर। प्रोजेक्ट के लिए भी आपको फीस पे करना होता है। तो ठीक है प्रोजेक्ट सर। के लिए जो भी फीस है आप पे करके फिर दे सकते हैं। ठीक है सर। तो आप अगर परसों, आपका तो क्लास नहीं होगा शेड्यूल में मेरे ख्याल से, नहीं संडे को। क्लास, थ्योरी क्लास नहीं है सर हम लोगों का। ये आपका प्रैक्टिकल सेशन है सब। ठीक है सर। क्योंकि अवेलेबल नहीं था तो टाइम, तो इसीलिए कम टाइम में जितना कवर कर सकते हैं। जो आपका चारों सब्जेक्ट है, 3 3 क्लास उसमें मतलब शेड्यूल किया हुआ है। ठीक बाकी है अगर सर। आपको इधर आके कुछ टूल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप 2 बजे आ सकते हैं। संडे को सर? हाँ, संडे को 2 बजे आ जाइए। ठीक आपका है। 1.5 2 घंटे का सेशन इधर डिस्कशन कर लेंगे, बता देंगे, सो दैट वो आपका। जॉन लास्ट लास्ट संडे में आया था सर, तो जॉन सर से डिस्कशन हुआ था, उन्होंने नंबर दे दिया था, तो बोले अगर कोई क्वेरी हो तो आई थिंक वो देख रहे हाँ हैं हाँ, इसको। वो भी साइबर सिक्योरिटी किए हैं यहीं पे मेरिट से। ठीक है। ठीक तो है सर। वो आपको गाइड कर लेंगे, टूल्स के बारे में बता देंगे क्या क्या ठीक है कैसे सर। करना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करा देंगे। जो जो प्रैक्टिकल एग्जाम में अभी आप अपीयर होंगे जनवरी में, आपका जी। जनवरी में प्रैक्टिकल हो जाएगा। जनवरी में भी 24 जनवरी के बाद आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक ट्वेंटी है। फोर्थ टू 30th जनवरी के अंदर सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बाकी अभी आपको थ्योरी देना होगा। बाकी SLM सबको, सेल्फ लर्निंग मटेरियल सबको मिल गया ना? और सर ये मतलब एक एक क्वेश्चन और सर, ये जो सेशन अभी चलेगा ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा सर दोबारा से बिल्कुल रेफरेंस? बिल्कुल, हाँ, ये भी आपका रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, ये सेशन का भी रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन आप अगर सब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं, मेरे ख्याल से आपका बैच में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट एनरोल किए हैं। तो अगर आप रेगुलर क्लास आएंगे तो टीचर को मोटिवेशन आएगा, टीचर टाइम से आएंगे। अगर आप ठीक है क्लास सर। ज्वाइन नहीं करेंगे तो टीचर को लगेगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अभी देखिए सबको मेल गया था, आप सिर्फ 8 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। लेकिन आप में जी। से कोई एक इनिशिएटिव लीजिए, मैं सबका नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। तो ठीक है। 2 साल तक आपका, आप सबका MSCIS है कि PGDIS भी किसी का है इसमें? MSCIS है ना सबका? जी सर। तो आपका 2 साल के लिए रहेगा वो ग्रुप। 2 साल में आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर।
सर ग्रुप में अपडेट कर दूंगा सर आज शाम तक। आपने ठीक ग्रुप बनाया है क्या, सुरेश? है सर, मैं बना रहा हूँ जस्ट। हाँ, तो आपने अभी ग्रुप बना दीजिए। मैं हम्म। अपना नंबर दे देता हूँ, मुझे ऐड कर लीजिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। आप ग्रुप का नाम रखिए MSCIS जुलाई 2025 सेशन, सो दैट सबको याद रहेगा, जुलाई सेशन में जो एडमिशन लिए थे उन्हीं का ग्रुप है। ठीक है सर, मैं क्रिएट कर रहा हूँ वन सेकंड। हाँ जी। ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपने क्रिएट कर लिया तो सबको या ऐड करा दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मुझे भी ऐड कर दीजिए, सब अपना नंबर दे दीजिए। और मैं किसी सुरेश के साथ या तभी से आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, सबको आप ऐड करा देना फिर, जो भी ये सर है। ये ग्रुप जो बनाया है, प्लीज जिसने भी बनाया है तो रिक्वेस्ट है कि ये इसका PGDIS इन्होंने वो कर दिया है टाइटल, तो कोर्स हम लोगों का MSCIS हाँ, है कोई सर। नहीं, आप MSCIS 2025 कर दीजिए। प्लीज जो भी एडमिन है जिसने ग्रुप बनाया, प्लीज ये एक बार ये कर दीजिएगा प्लीज। हम्म। ये मैं अपना नंबर आपको दे दिया हूँ इसमें, मुझे ऐड करा दीजिए। बाकी साइबर सिक्योरिटी का जो भी PPT वगैरह मेरे पास जो भी होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें। बाकी तीनों पेपर अच्छी तरीके से कर लीजिए। और थ्योरी में जब डायग्राम के साथ ही आपको करना होगा, जब आप थ्योरी एग्जाम देंगे। तो आप कंप्यूटर्स नेटवर्क में, अनिल आपके बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं अभी? जनरल डिस्कशन, फिर सर आएंगे तो जी सर। करेंगे। सर मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मैं केसेस से रिलेटेड कुछ पढ़ता हूँ, तो वो क्रिमिनल लॉ में आता था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि फाइंड आउट ओके। करते हैं कोई कोर्स हो। तो लकीली आई फाउंड दिस, तो फिर ये कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया मेरा देखा हुआ था, तो लकीली फिर सेंटर भी था वहां पे। तो ओके, दैट वे गुड। मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, फिर मैंने कहा एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ सीखेंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कोर्स है। MSc का डिग्री भी मिल जाएगा, लेकिन शुरू से एक पेपर के लिए मैं आपको बता दूंगा, आपका थर्ड सेमिस्टर में है MCS 226। ठीक है, तो वो है डेटा साइंस एंड बिग डेटा। जी उसका सर। जो PDF मैं अभी से प्रोवाइड कर दूंगा। जी मैं सर। देखा हूँ पिछले 3-4 साल से सारे पेपर क्लियर करते हैं, उस पेपर में बच्चे बैक रह फेल। जाता है। तो आप ओके। शुरू से ही मेहनत करोगे तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा, आपका सारे क्लियर कर लोगे। अभी ठीक जैसे है। एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलेगा, तो बिग डेटा आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसमें आपका जो 2 to 6 में होगा, मैं आज आपको ग्रुप में दे दूंगा, डेटा साइंस एंड बिग डेटा। ठीक है तो सर। वो आज का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटा साइंस है। ओके तो सर। डेटा साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और आपका डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है सर। तो उसका कॉम्बिनेशन है डेटा साइंस। अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो डेटा साइंस का जॉब्स भी बहुत ओपनिंग्स है। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो नॉलेज तो होगा। करेक्ट तो सर, क्योंकि उसका हम लोगों के तो केसेस में आता है ना सर, काफी जब बिल्कुल। 420 के केसेस आते हैं कंपनी से रिलेटेड, वहां बहुत आता है। ओके ओके, गुड। तो मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बाकी सारे बच्चे जब ज्वाइन करेंगे आप भी उसको दोबारा से शेयर कर लेना, क्योंकि अभी तो कम ही स्टूडेंट है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं बताया 30 स्टूडेंट है, तो सबको मिलना चाहिए। डेटा साइंस में आप थोड़ा मेहनत कर लो, बाकी आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और ठीक है सर। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको गाइड कर देंगे। ठीक ठीक है है, सर। बाकी और कुछ कोई शेयर करना चाहता है? सुरेश, आप क्या करते हैं? सर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ TCS पे। ओके। तो ही तो इज द नेट बेस्ट पर्सन टू एडवाइज एवरीबॉडी इन दिस कोर्स सर। ओके, थैंक तो यू। आप ओके नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, नेटवर्क सिक्योरिटी अभी नहीं है मेरा प्रोफाइल। एक्चुअली मल्टीपल टीम्स यहाँ काम कर रही है। चलिए, ये नेटवर्क भी आएगा, तो नेटवर्क के ऊपर मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ चीज़ें। ठीक है। उसके बाद लाइफ लिखा हुआ है, आपका नाम बताएंगे क्या है? नहीं, आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। लाइव किस लाइव ID से ज्वाइन किए नहीं? लवली, आप कुछ बताना चाहते हो? सर आप मैंने क्या कर पीसीए किया है अभी। अभी पीसीए किया है अभी फिलहाल। हाँ जी। BCA कहाँ से, इग्नू से किया है कि कहाँ से किया? सर केएल मेहता रेगुलर से।
ओके, रेगुलर में किए। पायल, आप क्या कर रहे हो? हेलो? नहीं, आप ज्वाइन करके अगर साइलेंट हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। आमिर, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपके बारे हाय सर। में। हाँ, हाय हाँ। सर, मैं आईटी में हूँ। मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंजीनियर हूँ। एक ओके। डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, आईसीएस इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आज जी सर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप काम कर रहे हो। जी सर। तभी आप क्या कर रहे हैं? सर हेलो? मैंने इंजीनियरिंग की थी। मैं कुछ टाइम जॉब करके अपने बिजनेस में था, हम्म, पिछले लगभग 10 साल से। अब हम्म। मेरा कुछ मन हुआ कि अब जो है थोड़ा सा इसके अपनी फील्ड के बारे में कुछ पढ़ा जाए, तो इसलिए ये कोर्स कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आपके साथ कुछ, जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, डिस्कस करना चाहता हूँ। जिनको आता है वो बताएंगे, जिनको नहीं आता है आपको आइडिया लग जाएगा, जो कि जी सर। कंप्यूटर नेटवर्क का भी पार्ट है। नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क, राइट? Connection of more than one device is called network, and the process through which we are connecting the devices is called networking. तो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में सुरेश आप कुछ बता सकते हैं? बिकॉज यू आर वर्किंग एट टीसीएस ना। Yeah, so working like we have a router, switches, access point. वेरी गुड। Yeah, so this is a तो major concern devices. ओके, देर आर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्विच, हब, गेटवे। मैं आपको एक पीपीटी भी शेयर करता हूँ, सो दैट आपको पता लग जाएगा। स्विच इज ए डिवाइस व्हिच क्रिएट्स द नेटवर्क, राइट? स्विच क्या करता है? बेसिकली एक नेटवर्क क्रिएट करता है। एंड राउटर इज ए डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स द नेटवर्क। क्रिएट और कनेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट एंड कनेक्ट? आप नहीं बताना, दूसरा जिसको मैं पूछूंगा, अनिल जी बताएंगे। कैमरा ऑन रख सकते हैं, डिस्कशन चल रहा जी है, सर। अच्छा लगता है। हाँ, आप जी एक्टिव सर, आई स्टेट में अंडरस्टैंड। रहेंगे। हाँ, हाँ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। हाँ, मैं ये बताया आपको, स्विच इज ए डिवाइस व्हिच creates the network and router is a device which connects the network. My करेक्ट। question is that कि what is the difference between switch and router? Switch gives the power and router gets the signal, if I understand. नहीं, आप तभी आप कुछ बताना चाहते हैं? आपका म्यूट, अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट है। Sir, I believe router is used to connect two different networks. However, switch is, I mean, in the intra network, it is a device to connect, मतलब, two राइट, different computers, or I mean a printer. ओके। And बेसिकली router can give an IP address. However, switch cannot assign an IP address. It do not have any DHCP server. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच, लेयर 2 एंड लेयर 3। नेटवर्क स्विचेस जो आता है उसमें आईपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास एक नेटवर्क नहीं है, अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कुछ सिस्टम को जोड़ना चाहते हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज स्विच और हब। हब में बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं हब में 8 पोर्ट होते हैं, राइट? लेकिन 8 से ज़्यादा सिस्टम या डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? स्विच। तो स्विच इज ए डिवाइस व्हिच क्रिएट्स द नेटवर्क एंड राउटर इज ए डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स। अनिल, खाली म्यूट कर लीजिए ओ। हाँ, तो आपको ये समझ में आया? तो आपको डिवाइसेस के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, आप डिवाइसेस के बारे में देख सकते हैं। एक मिनट, ओपन कर लेता हूँ। व्हाट इज डीएनएस? कोई बता सकता है आप में से व्हाट इज डीएनएस? जब तक मैं ओपन नहीं किया हूँ। Sir, domain name server. हाँ, क्या काम करता है, कोई बता सकते हैं? आपने सही बताया। डोमेन नेम, हाँ। अनूप गिरधर सर ज्वाइन कर लिया अभी। गुड मॉर्निंग सर।
Sir, good morning. हाँ सर, मैं इनको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आपका जो लास्ट क्लासेस का जो वीडियोस है उनको बता दिया हूँ यूट्यूब में। बाकी आप इनका अभी क्लास ले लीजिए, Sir, बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो 8-9 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, बाकी एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें सबको बता देंगे, तो नेक्स्ट क्लास से में भी ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। okay. टोटल जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है 30 है सर। Acha. ठीक है। All right, ओके sir. ओके Thank you so much, sir. Thank you. ओके 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 सर। So, very good morning to all. Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, thank you for joining, sir. Thank you so much. Just for some technical issues, I was unable to connect, but luckily now it's fine. Let us start today's session. I'm just going सर through. आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज में प्रॉब्लम है क्या? Just give me. नहीं, इधर तो आ रहा है, मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है अनूप सर का। अच्छा, आप एक बार नेट चेक करें, जिनका कुछ अगर कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क का तो। सुरेश, आपको सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir, clear है। हाँ सर, आवाज क्लियर है आपकी तरफ से, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स। So let us start your important part of MSCI 2021. And in this session, I hope you must have gone through with the blocks. And in these various blocks, you must have seen the topics. If you just take a look, I'll quickly share the topics to all. Just give me a minute. Yeah, I hope my screen is also visible now, right? Yes sir, it's visible. Yes, We sir. can. Perfect, perfect. So this is your MSEI 2021. Right, and this is your unit 1. So what is the purpose of information security? And this is the first book where you are supposed to talk about the business needs and the security awareness programs, right? So in this particular part, if you'll just check, so you'll understand some basics of cybersecurity issues. And I think this is more practical oriented sessions. So I would like to talk more on it. It also includes the important part that is related to your networks. So thank you, Tushar sir. I think you are just interacting with them, especially in asking that DNS and other details. So this is one of the part of this particular curriculum. If you will just go through, you'll find there you have to talk about the operating system concepts. So what is the operating system and how we can secure the operating system? So in generally, if you check your previous year question papers, so you might identify that what are the security features in your Windows operating system, or how to implement like firewalls. So these are the very common questions are there if you just go through with these topics. Security threats and vulnerabilities, basically it's a very open-ended, because whenever we are talking about threats, so in terms of threats and vulnerabilities, that is more related to system based, particular application based, like web based, or any particular infrastructure based. So that could be in various different format or different areas. So presently, because this is just a basic book, so I would like to suggest at least you should start always your cyber security sessions with the concepts of information gathering. Okay, so what is the concept of information gathering?
I'll just start with that part. So the moment you are into the information, what is information gathering? See, the steps, if you get into the security, and especially in MSCI 2021 or any other topic, if we'll go through, you will find that we are supposed to talk more on what is my target. So first you need to identify your target device, and if you have your target device, how you will identify that target device on the digital form. So you need to figure out their footprints, you need to do some social engineering, you need to do some scanning. So in other way, technically there is a one more word called reconciliance. So reconciliance is one of the technique by which you can process and you can collect a lot of information out of it, right? So quickly, I don't think so more in detail it's mentioned in these books. They even started like how what is computer and how computer works. So they initiated with this book. I think we can start directly with the basics, right? Yes, sir. So I think you just go through with your books and your all the units, and in case you face any inconvenience or any challenge you are facing in your books, I think you can discuss with me on that regard. In fact, I have seen sometimes they just mention like you have say different types of compilers. So I don't know in particular one of the topic, because you have three practicals, 21, 22, 23, or 124, I think so. One of three topics are there where you have the practicals. So out of that, in case you got some code sometimes, that can you implement the case of cryptography, wherever we'll talk more in cryptography. So you'll find a topic of cryptography that you try to create your own method, or we'll talk about Caesar cipher methods generally, where you are trying to do a symmetric cryptography and make a model or write a code using Python or C language or Java language, where you have to make two methods, encryption and decryptions. So sometimes this is also one of the question I have seen in previous question papers, right? So all you need to go through with these points. So technically, I think let's start without wasting time. Uh, Whenever we are into the security, always remember your basics of network must be strong. So as Tushar sir started and discussing with you that what is DNS and various other types of protocols are there. So we need to talk about various protocols. So what is this all about? At least you should be aware of all the protocols and at least their functionalities of protocols. So I'll give you a quick topics. I think for cybersecurity, you should note down the list of few of the topics if it's visible for all of you. Yes, sir. Please say, sir. Yeah, when one very important part, which is in terms of networks. So first, you should aware of all the protocols. Second, you should aware of OSI model. And now make sure whenever you're working with the OSI model, you have to explain for all 7 layers of OSI model. I hope you all are aware of these words, or there are freshers also. Sir, I am not aware about these words, sir. Acha, These terminology. okay. No problem. I'll then cover that part also, right? That's Thank why, you, sir. because, I thought you all are having at least basics of, no problem. I'll read the way of networks, because I started talking about all the real-time practical orientation. So no worries. I'll cover all the basics as well, right? So don't worry for that. Meanwhile, I'll just please note down. I think then we have some at least idea what we are supposed to learn, and we'll do it one by one. Sure, So sir.
make sure that you should be comfortable, and even it is also required for your theory as well. So one of the most important topic that is related to your networks, and the topic is OSI model. Basically, in case of networks, there are 7 layers. So those 7 layers are basically starting from uh, your the basic physical layer. The first one is generally physical layer. Then second is your data link layer. Third is your network layer. Fourth is your transport layer, and fifth is your session layer. Sixth is presentation layer, and seventh is application layer. You will find everything on Google also, 7 layers of OSI model. So first you need to understand what are the purpose of these 7 layers. But it is not only the purpose where you are supposed to go through with these 7 layers. Your purpose is also to understand what all the protocols are working. So we need to learn little extra on it. What are the common protocols or the services which are running always on these protocols, right? On these layers. So the concern is whenever you are on various different levels of networks, basically we always try to interact with the application layer. So as we can interact with like browsers, or we can interact generally with the various different layers of applications. It could be a mobile application, or it could be a browser or internet based applications. So all these applications try to generate your data, right, through certain application, and for those application we need application level protocols. So the top application level protocols, like HTTP, you have SMTP, you have FTP. So these are the kind of protocols which you need to understand what are the functionalities of these protocols as they are running on application layer. Now we want security on top of it. So security means you can go with the presentation layer. So I'm going through a descending order, 7th layer to 1st layer. So top one is always application layer, right? I have seen few of the your answer sheets. In one of the answer sheet, I have seen that somebody asked OSI in one of the paper, but the major problem is you always write your application layer as a first layer, and 7th layer you write generally as a physical layer. No, the first layer is always physical layer, but we are specifically, you have to mention, we have to specifically writing in descending order. So quickly, I would like to share that screen to all of you, and just give me a minute. I'll save your data. MSEI, we have 021, right? Okay. So quickly, if you'll just go through on Google as well, you will find that OSI model. So simply, if you just go, you'll find the complete image. In fact, you can directly go and find the image. So there are a lot of images available, and you will get a proper content. What is this OSI model all about? So in this way, just take a look. It is written always in the descending order. You must have seen it is written in descending order. These all 7 layers. So 7th layer is the application layer, because the user always interact with the 7th layer, right? And now this is not only you need to read, because you people are in cyber security, so we have to learn little more on it. So what all the protocols and services running on each layer. Okay, so with the protocols and services, so I'm just writing it for you, right?
and at least you should understand what we are supposed to talk about and explain. Generally you will get a big question on this particular regard, like, so what all the protocols running, and uh, if I'll just check any one of it, so you will find the list of the protocols and their services over there, right? I think you can also search at your end and you will get a lot of things on it. Unable to see the shared screen. Yes, what about others? Can you see the screen? No, sir, we also can't see the screen, sir. Acha, give me a minute. Let me check. I'll share it again. I hope now it's visible. Yes, sir. Great. So this is one of the screen, if you will just take a look, where I was talking about the concepts of OSI on network layer. So there are 7 good layers which are written in descending order, and you need to understand that how the thing works and on which layer what all the services or the protocols are performing. So you can identify that we have a lot of data like HTTP, FTP, even SMTP works on application layer. uh, I feel some changes in these layers basically, but that's fine. I'll explain you in a proper way. In this case, I feel the SSH should not be with the application because it is more like a tunnel, and we are supposed to connect like there was a application called Telnet. So Telnet is one of the application by which you can able to interact with the other servers. But today we have another level of application like SSH, which is an encrypted one. So whenever we talk about the encryption layer, so that always supported on presentation side. So we can go with the presentation side, and then we have a lot of sessions like you have sockets, APIs, in especially whenever you are with the web-based applications. So we have to create sessions
For each user, there is a session. So that comes onto the session layers, how you will manage all those sessions. And then further, that is the most important part, which is fourth and third layer, TCP IP. We collectively call it TCP IP, but actually TCP is a different protocol, IP is a different protocol. TCP is a transmission control protocol which works on the transport layer, and one more protocol similar like that called UDP, which is user datagram protocol. And now the major difference between both of them is like TCP is a connection oriented protocol. So I will show you the practical where is the connection oriented and how you can check. So in this case, even if you are on you know Windows or you are on Linux, are you comfortable on Linux? We are Yes, working on Windows, sir. अच्छा, Windows users हैं आप सब. Okay. So to be very honest, initially that is fine, but slow and gradually you have to switch on Linux also, because Linux is another important aspect these days, especially whenever you are interacting with the cybersecurity. So no worries, I will show your part of practicals also on a Windows, and as well as on Linux. So even you want, we can work on Mac OS also in the same way, same pattern, because the Mac is nothing. Also, it is based on the similar like Linux kernel. So we'll talk about all these layers step by step. So always remember, you need to learn the 7 layers of OSI and understand what all the protocols and the packages are or application services are running on these 7 layers, right? This is one of the part where you have to understand. And if I really want to check, you can run the same command right now. Also, you can run the same command on your machine. There is a command, and even this is a very important command, I would say. I solved many cases on this particular regard. So I solved various cases. I'm into investigations, and uh, okay, actually, I just joined late, I believe. So I have not introduced, and I believe we all are connected, and you must know the details. I'll just give you the brief. I'm a consultant to various law enforcement agencies. So I'm supporting them for the investigation. So I'm a on record trainer and consultant with the Delhi Police Cyber Cell, and then CBI, CID, Anti-Terrorist Squad, Indian Army, Delhi Police Crime Branch, Mumbai Police Crime Branch, BSF, Air Force, NSG, SSB, NTRO, NCI, IPC, Ministry of IT, especially CERT, Computer Emergency Response Team. So today, 15 plus scientists working over there were luckily our student, right? So that is the nodal agency of Government of India, and that you also have to cover in terms of law, cyber law. Also, you will identify in India. We have a government agency called CERT for all the. It's a nodal agency for the Government of India, the front face of the security, for especially for cyber security. So we train too many scientists over there, and even in DRDO. So we are working with the DRDO and supported DRDO, and today I think 5 6 scientists were also our student working over there. So So I'm we have the best teacher to learn everything on this platform, sir. We thank are you, thank grateful you to so you, much. sir. Thank you for giving me and saying your kind words. We'll talk about all these areas slow and gradually. So understand like what all we are supposed to do. I just want to show you a one single command, and this command is the best part. It is applicable even on your Android or any other platform, Windows. So quickly you can also run right away. Right away, open your CMD. I hope you know CMD in your Windows. Just try it right away along with me, and simply write one command called netstat -n, right? You need to type netstat space -n,
In Linux, I'm just writing an, but for Windows user, you just need to write the same command, net start space -n. Okay, rest you need not to write, but I just want to write it to create a screen, the first top screen, and need a pause over there. So that is why I wrote more. And you'll find one of the important part, that see the list of the protocol. Basically, this command will show you the active internet connections. So presently in your computer, can you check that your system is presently connected with how many foreign IP addresses? So first you need to understand where is your IP. This is my IP right now as I am working in my LAN. So presently my machine is working with the IP address that is 192.168.1.13. You can check whatever the IP is there assigned to your device, and how it is being assigned. There is another protocol, we'll talk about that as well, that is DHCP. So dynamic host configuration protocol, we'll talk later on that. But we need to understand where is the IP address and what are their port numbers, right? So I'll talk about port number. We need a separate session for this as well. We'll talk on port numbers as well, right? And apart from that, you can check the most important part, your foreign addresses. So can you see the foreign addresses? And in the list of foreign addresses, you will find various IP addresses. So today, right now, this is a live connections. Presently, my system is connected with this particular IP, is connected with another IP, similar IP. So I have two different sessions. Now I think you can understand what type of sessions I'm talking all about, because in my machine I have a one session which is working with the 39850 and one more session called 39856. So two sessions are going on. So I think now you can understand what type of sessions I am talking about, and TCP connected with these sessions, right? I think now you can correlate with these layers, and practically you can check what are the things going on the back end. So I have some IP addresses. With the same IP, I have two sessions, and various other IP addresses which I can identify where my system is associated. So now challenge is, these IP addresses belongs to whom? Am I connected to any unauthorized servers, or is there any malware in my machine which try to create a connection on the back end with these third-party servers? How can I identify? What is the best practice to identify that my system is connected or associated with these third-party service providers, right? Or although I just open one Google Chrome, and second I open some 2-3 sites, this third site is also there which I just open it. So the concern in the networks are basically, we need to diagnose, we need to identify. So IP address works on network layer, IP address works on network layer, right? And more things which are mentioned related to IP, so that is on network. So we all are associated with the network. So our identity on the digital world is basically an IP address. This is my identity on the digital world. But this is again the IP address associated in the LAN. It is a LAN, it's a private IP, it is not a public IP. There are two type of IPs whenever you are on the internet. Always remember, there are two different type of IP addresses whenever you are on internet. So if you want to check your public IP address, you just need to go and type one website, what is myip.com. Try this website. Everybody should try this website. Basically, this website is used to identify that from which IP address you are accessing internet services. So I have shown you one of my private IP, and now I am going to show you my public IP, right?
So it gives you details and a lot of information about your IP address. So you probably have IP addresses from say Airtel or Vodafone like Geo or these other service providers. So can you see presently my location? It's not Noida. I'm not in Noida. I'm in Delhi only. So don't get confused with these things, because I will guide you what are these information all about. Basically, these are the details of the service provider. These all are the details of the service provider. That means I have a internet which is on Airtel right now, where I connected to, that is Airtel, and that Airtel company address belongs to somewhere in Noida, and I'm working in India, so that is why my UTC plus 0530 is, that is from India. The best part is you will find my IPv4. So you will find some another IP, that is 110 series IP, if you will see. So this is my IP address. Whenever, or probably you get some IPv6, there are two different values. So you will get IPv4 or probably you will get IPv6 as well, right? If you connected with the mobile internet, if you generally accessing your internet via mobile, then mostly you will get IPv6, right? So you are supposed to identify your IP addresses. So this is your identity. Remember, whenever you connect to internet, whenever you are on internet, what is your identity? So you have two different types of identity. First is the LAN. So in LAN, I have this IP address. So within the LAN, I want to check in my LAN how many computers are connected in my office, how many computers are there, and out of that, this is my unique identity presently associated in my network. So this is my private IP address. This is local address, private IP address. But always remember, whenever I connect to these third party service provider, third party IP addresses, generally you will find private or public IP addresses as well. Both the IPs listed in this particular command. So you can find the public IP addresses. These all are public IP addresses, similar like my public IP, which I have shown you. So that means what? That means my private IP is listed. My private IP is generating a data packet, transferring that data packet to my service provider. So my router, first of all, from my machine, my data goes to the router, and from the router, my public identity performs, and from that router onwards, from router onwards, my this particular IP performs with the same port number and send the data packet to this service provider, which is the foreign IP address, and there they'll accept my data. And there again, they also have the ISP, and their ISP provide their IP address similar like this, right? So this is their ISP's IP, which is associated with some computer on the back end, and they must have some server or multiple servers depending upon where you are associated and connected. So they have their own local servers with their local IP addresses in the same pattern, and then your data transmitted to this particular port. Sir, the Your screen. shared screen is not visible. Yes, sir. स्क्रीन कहाँ गायब हो जाती है? I already shared. अच्छा वेट करिए, दोबारा करता हूँ. It's already there. Some glitches I think in this sometimes, Maybe network का issue हो सकता है सर. otherwise I'll just quickly show you again. Uh, so in such cases, please stop me there and then, so that at least you will not miss.
Again, I'll share it. I hope you are also doing parallelly in your computers. You're running the same commands in your computers as well. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. I also have this my IPv4, IPv6, but I Mila na? couldn't make it out what it is. I was just listening. No problem. Just identify this is presently your IP address, your public IP address provided to you from your ISP, Internet Service Provider. So Okay. at least let us have some basic idea of the networks, that how networks are working. So I'm just going to explain all these points. I quickly show you again. This is what the command of netstat which I wrote. You can check. Now screen is visible. Yes, sir. Now it's visible. Great. So this is the basic command which is running, right? And the moment I run this command, it displays me the list of all the active internet connections which are presently available on my laptop, right? So the list of the protocols, you can check the list of the protocols, that is TCP or TCP/v6 protocols are there. So TCP, okay, now the again question is, TCP protocol works on which layer? On which layer? TCP works on which layer according to OSI? Applications. I'm checking here. Layer 4 TCP UDP. Just take a look. The answer is, the correct Layer answer 4. is layer 4. Yeah. Right, yes. It's transport layer. And that is TCP and UDP. Understood? So you have a transport layer. That is why I opened the OSI model, so that it becomes easy for you to understand that what are the purpose of these models and practically how we can associate things. So transport layer, basically this is your layer, and TCP protocol, that means we want to see. Now what is TCP? You need to learn one more important part. Please note down, what do you mean by three-way handshake of TCP protocol? That could be one of the good question for your theory, and even for your interviews. Sometimes if you'll go for the some related to job prospects, so if it is related to network, but these are not only now network, these are very common things. If you are from security, see, security is not a basic layer. Please try and understand. If you really want to get into cyber security, it is according to me, it is always on the third layer. The first part is understand the technology thoroughly. You have to be very, very good on the technology. Let's say today we started with the networks. So you should be aware of how networking perform, how it works, how computers are associated with other computers, globally or locally, or either way, right? There are different networks, LAN, WAN, MAN, PAN. So many IEEE standards are there. You can find certain IEEE standards of 802 series is there. So 802.3, which is Ethernet. So note down my points, I think would be really helpful for all of you. 802.3 for Ethernet. You can have a 802.11 for Wi-Fi standards. You can have a 802.15, that is PAN, personal area network, which includes your Bluetooth, right? Or general personal area network. So you have 802.16, which is WiMAX. For a wider range, we use WiMAX technologies, and spreading or expansion of your internet services to the remote areas, we sometimes prefer WiMAX, or extension of WiMAX with IEEE 802.20 series are there. So these are the certain standards. मतलब ये ऐसे क्विकली याद होने चाहिए आपको. You should go through. For more details, you must check IEEE 802 series. 802 series. So, and you will find what are the common networking standards.
Okay, and then we have a 7 layers of OSI model. At least you should aware of, so that practically you can understand which layer performs what type of protocols on which layer and how it is performing and how it is working. So there you for your TCP, it's a connection oriented. That is why there are two different protocols on layer 4, and generally two protocols, and now many services being added like end-to-end encryption, TLS, transport layer security we talk about, and various things we talk about. But first you need to understand what is TCP, transmission control protocol. Second is UDP, user datagram protocol. Even you can find the difference. What is the difference between TCP and UDP? So the common difference and the most important difference is UDP is connectionless protocol. Connectionless, and TCP is a connection oriented protocol. So for connection oriented, we need three-way handshake model. So you should be aware of these technologies, these terms. What do you mean by three-way handshake models and all? ठीक है, ये थ्योरी में भी आता है, और आपको थोड़ा सा इन सब चीजों पे बेसिक्स पढ़ लेंगे ना, on a means you can take it, this course as a capsule course, and quickly if you just know these things, you can sit with the all the good experts at least in that particular domain, and you can talk to them with the domain experts, right? So at least you should aware of these basic things. That would be enough. Now how the internet is working. So I started my computer and I got a one IP address. How to get the IP, I will just explain you after this part. Let me complete this part because screen issue was there, and again I'll repeat this part. So you can find there is my IP address. So once I have this IP address, which is my local IP, okay, and this local IP, then colon, there must be certain port numbers. So we'll talk about port numbers as well. And further, I have a foreign IP, which is the public IP. So these all are the public IP addresses. Colon, after colon, again there is a port number, and presently the connection has been established. It means right now my system is associated, connected, and transferring the data with these public IP addresses. Did you really open these 4-5 websites? I actually open in front of you only this particular site, then third one, and this your So there's some issue with the screen again, I think. फिर से गई क्या स्क्रीन? कुछ प्रॉब्लम फिर पीछे से है, आई डोंट नो. I already shared. Again, I'll try. Again, I'll do it. I think some buffering issue probably, because I have good internet connection. So quickly, I'll just complete this part and complete this part, right? I think now again it's visible. Yes, sir. Okay, so just take a look. This is what I was about to share. If you run the same command net start in your computer, and you will find there are protocols. Then we have again what are like if the data is moving, and whether you are receiving the data and how many data packets which are in the queue. Connection is established, but presently there is no data transmission because the data has already been transferred. So nothing is in the queue. Then there is another option called send queue. You are sending the data packet or you are receiving the data packets. It's like for that. Then we have a local address. So you have your local IP address. Then there are certain port numbers. I'll talk about port numbers later, but right now understand these. After colon there is a port number. Okay, these all are the socket numbers or port numbers. Then we have a public IP address, then again colon, and again their port numbers of third party website where I am associated, and my system is transferring the data with the three-way handshake of TCP
and data is moving towards these machines, these servers, and presently connection has been established. Listening mode means my computer is open with these ports, but presently there is no connection with any foreign IP. So I'm on the listening mode. It means, take it like you open a door of your residence, but nobody is entering right now. It is open to accept the people or anyone who can enter without any hassles, right? But right now the three-way handshake has been established with these machines, these IPs. Quickly, everybody just go and check. I have shown you one more website called whatismyip.com, and in the whatismyip.com, I hope now the screen is visible. So on the top it displays you your IPv4, or in case if you connected with the mobile connections, then you must have a IPv6. Now what is IPv4, IPv6? I'll elaborate, because that is very important part again. What are the size of IPv4 or IPv6 format, how it presents? We'll talk technically later. But first you need to understand that this is my LAN identity. This is my network LAN identity in my LAN. Second, my internet service provider. Let's say right now I connected with the Airtel, and Airtel is providing me this IP address presently from where I'm accessing my internet. So everybody can see the same way, same pattern, that what is your IP address and what is your service provider, your ISP, who gave you the internet connection, and presently your public IP address. It displays your public IP address. Is that concept is clear? What is your public IP and what is your private IP? So two different types of IP addresses, two different entities are there. You always have two IPs whenever you are on internet. If let us assume I am on LAN, but I am not on internet. My internet is down from service provider. Still, can I access the data? I can access my network. So the answer is yes, we can access. Let's say I have multiple computers in my LAN, so my machine can associate and send or receive the data packet from the machines which are associated within the LAN. I'm not talking about internet, I'm talking about local area network. So yes, we can associate because the networking is enabled and my local IP is enabled, right? It is working. But if I want to send a data packet on internet, so from my machine, this is what my identity, my machine will send a data packet to my routers, and from router onwards, you will identify your public IP. And from that public IP, data goes to the another servers globally via internet to their public IP. So this is the list of the other side public IP, foreign addresses. These all are the foreign addresses. And the data is going to which particular port? So again, their port number has also been mentioned. And the status of the connection, that is, connection is established. By doing this, we solved. I think this is one of the way. अगर आपका घर में कहीं trojans हैं, you know trojans, one of the malware. If your device has been compromised with some trojans, or somebody gave you a link, कहते हैं ना mobile पे, if you get some link, never click on those link, or on your laptop if somebody send you some link, so never access those link. Reason, because that could be one of the reverse TCP connection, and as and when you start your computer transfer the request to some third party hackers, and they can access your computer remotely. So how can they access your computer remotely? And the best part, it was programmed, newly programmed. Because it is newly programmed, so probably latest your antiviruses or malware detectors won't be able to diagnose or identify that whether it is a malware or it's a trustworthy, legitimate application. So if it is a legitimate application, like AnyDesk, anybody worked on AnyDesk?
आप लोग काम करते हो एनी डेस्क पे? Yes, sir. Yes, sir. है ना पायल? ग्रेट. सो एनी डेस्क है, टीम व्यू, वो है टीम व्यूअर था. सो देयर आर मेनी टेक्निकल सपोर्ट एप्लीकेशंस आर देयर. अब एक एनी डेस्क और एक ट्रोजन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. यू नो, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. Only the part is they have a UI and they'll ask your identity. Once you share your identity to the third person who from where you want a technical support, then only they can take your machines online and they can check your screens and troubleshoot on your machine. So the any desk is just similar like Trojans, but obviously it's a legitimate one for troubleshooting. तो आप इसी सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोग्राम, सेम एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशंस फॉर रिमोट मशीन्स. और अगर मैं फ्रंट एंड हटा दूं, if I'll just remove the UI and if I'll have the same features, everything same. So somebody gave you some link and the moment you click on that link, then your device get compromised with the third party provider and they're accessing your computer throughout the life. पता है वो कोड और आसान है as compared to any desk. क्योंकि the back end connections maintain करना easy है ना. Everything is like what? It's a backdoor connections. तो आइडेंटिफाई कैसे करो? हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट योर डिवाइस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट? सो लेट अस टेक अ टास्क. आज का टास्क ही यही लेते हैं. कैन वी एबल टू आइडेंटिफाई दैट माय डिवाइस इज एसोसिएटेड प्रेजेंटली विद सम रिमोट मशीन्स and my concern is, my challenge is, I need to identify where my data is moving. For that, that is why I have taken this command as a base command for today's session. And there I found some foreign IP addresses. That means presently my machine is transferring the data to these third-party IP addresses. Now I need to identify ये IP किसका है, from where I am associated to. आप एक बार चेक करेंगे, you will find. अब देखो मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ. Slow and gradually you will learn the patterns. आप एक पैटर्न चेक कीजिए. कोई 142 वाले सीरीज का कोई आईपी एड्रेस आपकी भी मशीन में है? इफ यू रन अ netstart command, is there any IP address starting from 142 and ending with the port number 5228? Probably you have a different number at this stage. Probably you No, have a different numbers no at this sir. stage. मिला No sir. 5228 वाला? No sir, 142 से कोई नहीं है सर, और ending with port the same number is not there sir. Not there? जी सर. अच्छा, कोई बात नहीं. एक बार दोबारा जरा नेट स्टार्ट चला के देख लीजिए रनिंग रियल टाइम में. बाकी सब भी चेक कीजिए. Something has reflected. Let me. One, four, two. Everybody do the practicals as well. छोटी छोटी कमांड्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है. It's like parallelly you can run along with the class. Yes, anybody identified this? Similar like that? बाकी किसी को मिला क्या? No sir. अच्छा, no problem. Can I share sir what is on my screen? You can share, why not? I'll just stop presenting. You can also share your screen. That would be great. I'm just trying. It is not happening. I'm just trying. Can I just try it again? It is showing the TCP. No problem. Just go through and start. Share your screen.
Not able to, sir. It is not happening. I don't know what it is. You are unable to share your screen? Yes, sir. I am unable to. Acha. Probably the permission issue. Maybe, sir. I That don't could know. be, so that could be a permission issue. No problem. Okay, I'll just give you some fair idea. Whenever we are on video conferencing, Yes, sir. generally it has been identified whenever we are on video conferencing. So presently I'm also trying to present my data, right? As I'm on a video conferencing app, sort of this. So you either try WebEx, you try your that is Microsoft, and then one is WebEx, Microsoft Meet, Google Meet, or Zoom, Zoom dot. So there are various platforms from where we can have online sessions or online video conferencing sort of. In the common pattern, I identified that the port number 5228, right? 5228. So you can check the port 5228, right? So you can see it is the port number for Google. Even you can identify it like this. Can you see this? Yes, Right. sir. We can. It is for from Google side. So the IP which I was talking all about, that 142, I will show you the exact facts. This IP belongs to Google. That means we are on Google Meet, and I am on this particular port, and I'm sharing this resource to all of you. So the moment you'll type and press enter, and you will find the details that this port is more related to some video conferencing part. So you need to learn these technologies. You need to see Google Cloud Messaging. Can you understand? This is one of the backend service called GCM. So because I'm going to push my data online, right, and facilitating certain browser extensions, pushing some notification, right? Are you getting my point? So you can Sir, find various, sir, I have just tried to search this port 5228. It shows Firebase cloud messaging with no this problem. terminology. No problem. Almost same thing. Okay. Firebase cloud messaging is nothing but see the Google Cloud Messaging GCM, Okay, sir. right? So if you can see my screen, can you check Yes, my sir. screen? Yes, sir. So Google Cloud Messaging, and the main concern is on the back end. They use the UDP protocols, and to create a connection, we need TCP protocols. So two different protocols are associated and working on this regard. So by identifying these ports, it very clearly mentioned, and if I found these kind of link, so there is a pattern, and this pattern always identified whenever I'm on browsers. So I'm on Chrome browser, you can see this, and I'm doing this Google Meet via Chrome browser. So if you are also on a Chrome browser and on a Google Meet and sending messaging services which are already incorporated behind this, that is why the port number 5228 has been associated. Similar way, you can find the another port number, that is 443. So 443 is always HTTPS. So as I connected with HTTPS, can you see HTTPS? Your browsers are always on HTTPS. Mostly you must have seen HTTP or HTTPS. Correct, sir. We can see it. Right? So if you go and identify the detail about port number 443 in the same pattern, you will find that it is associated to HTTPS. See, this is what it is saying. And you have a TLS, Transport Layer Security Incorporated, or SSL protocol being incorporated with the port number 443. That means the connection is highly secured connection. So data is moving on the encryption standards. Data is moving on the
encryption standards, it means no one can hack the data behind this communication. There is a specifically attack called man in the middle attack. So वो no one स्क्रीन can, दोबारा चला गया, आई थिंक यू वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट वो स्क्रीन सिर्फ लेयर वाला शो कर रहा है सर हम लोग फिर से स्टॉप हो गया क्या? जी सर ये बफरिंग का इशू है, आई थिंक ये गूगल मीट से या कुछ और. I'll stop it again and I'll share it again. So you can also try port number 443 at your end, and you can identify that your port 443 is basically for HTTPS. So that means my machine has been associated with the web servers and transferring the data to the web servers. तो ये ports हैं, हम लोग ports पे और detail में बात करेंगे. So just note down, there are various ports and you will find that your device has been associated with these ports. इस तरह से आपको कुछ लिस्ट मिल रही है ना. हम फॉरेन एड्रेस को ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि मेरा डेटा जो जा रहा है वो इन पोर्ट्स पे जा रहा है. वाया दिस आईपी किसको जा रहा है और कैसी सर्विस के थ्रू जा रहा है, ये दोनों चीजें इसमें आइडेंटिफाइड है. राइट. सो नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. इज दैट क्लियर टू ऑल? अभी इतने में कोई डाउट है किसी को? नो सर. Is that clear to everybody? Sir, in my system, since I am working with the lab currently, so from what I can see, the foreign address does not reflect any kind of IP address. Usme directly I am able to see a name of the system that I'm using. No problem. So what does that mean? You write a net stat, but you never write -n. That is the only reason. You can try another command, just terminate it and just type -n and you will get the numbers. Okay. ठीक है. N is for numbers. That is the option of net stat. Got it? Yes sir, now we have. I was also facing the same issue, but now we have. आप लोगों ने -n नहीं लगाया था. Yes sir. At the initial stage I told you ना, please go with a -n. Correct sir. हाँ, वो नेम दिखा रहा था आपको. वो नेम दिखाता है, डोमेन नेम्स दिखाता है. अगर आप n Now नहीं we have. Now I have these 443. It is showing me 443 with the 6 TCP. Now you understood the connections and Yes. their all details. We are trying, sir. Something we have understood, sir. Perfect. Great. So you need to find out where your device is associated with all their foreign IP addresses and what are their status. ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? Yes sir, we can move forward sir. Perfect. Good. Now next stage. So the main concern is how to identify where is your IP address, what is your IP, and the details of your networking, your connectivities and the part of your status of your present networks. So we need to figure out that part. Second, your public IP address. Third, the associated data packets where my presently on a real-time basis on the active connections that my data is moving from my device to some third-party device. So my concern is, can we able to identify who are these third-party service providers? For that, we need to do the concepts of reconscience, or in other way, it is a concept called information gathering. So we got a challenge. The challenge is like, my device is presently connected with this IP. Now, this IP belongs to whom? I need to find out. You can take any random foreign IP, okay, in your machine as well. So my challenge is, I need to find out where this IP belongs to and whether in which country it is running and it belongs to which particular service provider. I need to find out their details. So to find out all such details, what is the best practice?
you need to copy the IP address. So just right click or copy, or control C, you select and you have a control shift C also works in Windows. Control shift C. So just highlight the IP and say control shift C. That would work. Or right click, you have a copy command. So you just copy, you can see control shift C, right? So you can try in your machine, you just copy that IP. Now I need to find out this IP belongs to whom. So for that, we need to go through with one of the internet based service provider, one of the service of one of the governing authorities of internet. The service, the name of that service called as who is. What is it? It is called as who is. Now what is who is? Who is basically a service provided by the provider called ICANN. ICANN. Sir, can you start sharing your screen again? Acha, okay. So note down, you can Google it also. The just Google it. One of the name of the organization is ICANN. ICANN. That is it shared now? Yes, yes. Okay. So one of the service called ICANN. ICANN. Yes, sir, we have it, sir. We have ICANN it. is one of the body that is Internet Corporation for assigned name and numbers. अभी Correct. मॉर्निंग में तुषार सर आपसे पूछ रहे थे ना DNS बताओ, Yes, sir. है ना? Just give me a minute. Okay, so there is a one department called ICANN, that is Internet Corporation for assigned name and numbers, right? So one of the department called ICANN, this is a one of the governing body, a sister concern governing body of internet service providers, basically who governs internet. So that is one of the body called ICANN, who maintain the records of all the name means domain name, all the domain names, and numbers means IP addresses, right? So they provide certain services that globally, an entire world, who maintain the records of every single domain name and every single IP address associated to whom. How can we identify? So to get that details, we need to access one of the service provided by this organization called ICANN, and the name of that service is who is. एक सर्विस है जिसको कहते हैं who is.
So all what you need to do, I hope my screen is visible to all of you. So you just need to type. No, sir. Sorry, sir. Screen is stopped. सर वो बफर रुक गया है स्क्रीन का आई थिंक यार ये कुछ क्या दिक्कत है, आई डोंट नो, कुछ कैशे क्लीन करते हैं या तो। चलिए इस सेशन के बाद मैं करता हूँ। ओके, सो who is one of the service provided by the organization called ICANN, which maintain so मैंने एक वेबसाइट लिखा, ऐसे आप कुछ भी randomly there are thousands or even lakhs of website, thousand नहीं, lakhs or even more than that, all domain provider जहां जहां से आप लोग domain name purchase करते हैं, so they also gives you DNS services, domain name services, right? So the information placed in the DNS records being placed and stored permanently with the provider called ICANN, and we can access those services by using one of the backdoor who book my domain name. So that is a footprint. इसको हम साइबर सिक्योरिटी में कंसेप्ट बोलते हैं फुटप्रिंटिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे निकालेंगे किसी का। सो एज आई कॉपीड दिस आईपी, I already copied this IP, and now I'm going to place one of the website like whois.domaintools.com/, then you can write any domain name or IP address. So any name or numbers, that numbers are IP addresses and names are basically domain names. सर So स्क्रीन शेयरिंग का इश्यू है सर, अगेन इट इज स्टॉप्ड सर। अरे इतनी जल्दी something, is it visible now? नो सर, नॉट नाउ सर। Now we can see something. Now you can see now, perfect. So you can take a look on the top. I just open a new tab. On a new tab, I just use one URL, and that URL is whois.domaintools.com/, you can write any IP address or any domain name. अच्छा 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 Taveez ji, I think you need to mute. Mr. Nawaz, your mic is open. It's coming in class, please. हाँ सर, यही कह रहे थे कि I can't manage my side, otherwise I'll try. No, I don't have option. आप एक काम करिए ना सर, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अगर रिसीव होगा उन्हें तो रिप्लाई करेंगे। Mr. Nawaz, your voice is coming in the class. Please unmute yourself. नहीं सर को नहीं, जो ये आपके कंसर्न आदमी है ना, इसमें कर दी सिग्नल, अगर इनको सिग्नल में can't manage. हाँ ठीक ठीक ठीक। Okay, so I think you can take a look. So yeah, there is a website called whois.domaintools.com/, then further you can paste a IP address or any domain name if you want to test their services or check. Right, and just to understand whether you are a human or you are a
running any automated script. So just to segregate, they want a captcha and they're asking for that. I am not a robot, so you just need to click on it. I have run it, sir. It shows malformed domain or IP. So you will find their details of that service provider, that this IP belongs to whom, and even you can find their name, number, address, phone number, location, their geolocation. You will find a lot of things over there. Are you getting my point? Yes, sir. So this is the back door. That means you will understand this IP belongs to which country, at which location, or any particular organization who is running this IP, who hold this IP. So you can find all their information, all their details from the back end, right? So in this way you can test and you can practice. Actually for Windows you are supposed to do like this, but on Linux, anybody who is on Linux, we don't wait for so many things, because on Linux we already have the command called who is in Linux, and I just need to paste the IP address like this, and simply I need to press enter and I will get the complete details. So you can see that this IP address, this is the same report but obviously in the command line. This is the list of the IP addresses belongs to Google. It means my machine is connected and associated right now with Google, and if you check their name you can find their address, the country where it is being associated. This IP has been registered with Google since 2006 and last updated in 2019 with other details. Their number, their landline number, in case if you have any abuse related issues with Google services, so we can report on this number, or we can send a complaint to this Google Cloud Service provider for any abuse as well. So this is the backend. This is the best practice to identify the backend provider of any domain name. आज आपको लगता है सर एक वेबसाइट, हमारे पास केसेस आते हैं सर, आज एक वेबसाइट चल रही थी, उससे कहीं कोई फिशिंग अटैक हुआ, या आपने सुना होगा फिशिंग अटैक हो गया, या कोई केस ऑफ इम्पर्सनेशन हुआ, या कोई फ्रॉडलेंट ई कॉमर्स पोर्टल था एंड दे collected money and now they ran away and now the site has been down. अब तो साइट ही नहीं खुल रही है सर, तो हम कहाँ जाएं? How we identify? So the best practice, if you know their domain name, you just note down their domain name or their IP address. If you know their domain name, like you can share, let's say I'll show you directly who is, and from who is, let's say I want to identify igno.ac.in. Suppose I want to define the details about igno. So simply you need to write a who is service. Obviously connection refused because they don't allow you to access government sites or certain sites being prohibited. And otherwise in the same pattern you can write igno.ac.in or any other details to identify, or your corporate details, your company details, who issued that domain name, what is their number, their address. So you will find the complete information sometimes on the back end. Same way, if I found the IP address, you can find out those IPs. There are many IPs, like one is 54. So can we try with one more? So I'll say copy this, and now who is with that particular IP, you can try and you can find out that this IP belongs to Amazon EC2 service provider. That means somebody hosted their website on Amazon server, any one of that. I don't know who was that, I need to figure out later, but any one of that, probably this website or any other site, who hosted their website on Amazon cloud. So if it is on Amazon cloud,
So where it is located, what are their name of the organization, their number, their address, their phone number, everything is available like this, right? So can we find out the hidden information? Even the website is not running, you can still find their details, and you can identify the content. Although these days there is a separate service and you can pay if for the privacy or some legal issues, or some the data should not be misused or accessed by some open-ended marketing agents or some other agents. So for that, even we can pay extra to hide such information. So they can hide your information only available for the domain name but not for the IP addresses. So the best practice, you can hide your details, right, in case if it is related to your domain and you do not want to share with third party. But hardly matters, because you can ping. Now I have another command called ping, and igno.ac.in, if I'll just go through, you will find a The screen direct is not IP shared, address. sir. Screen is not shared again, sir. It has stopped. ये क्या concern है? Okay. You can try on the CMD. Just try on the CMD on your command prompt. And is it visible now? Right. So Yes, sir. on the command prompt, you can try a command called ping, PING, on your CMD, and type like igno.ac.in. Everybody just try like this. Okay, sir. And now you got some IP. Yes, sir. We got some IP, sir. So the moment you got an IP, just copy that part, and again you can go with the who is. Obviously in Windows you need to go through with third party, or you can find various websites are available. Simply you go with who is, right? Simply you can find who is. On Google you will find various service providers, right? It has shown, sir. This has come up with in the India New Delhi Indira Gandhi National Open University. So you find Domain that, tools I have tried, but it has shown, sir. correct? So Yes, sir. understood. Via domain name, probably you unable to identify it, but it is very clearly mentioned that this IP address belongs to Indira Gandhi Open University. That means this IP is running within the university, Correct, sir. right? You will identify that this is running, and it means the web server, this web server from where you are accessing igno.ac.in, located within your campus, and the detail about the address, you'll find somewhere Mr. LM Pant must be one of the person who is taking care for your domain and your abuse about this domain name. So the role of that person is deputy director in Medangadi. And the best part, you got their mobile number and their email ID as well. Yes, sir. Understood. Same way, you got one more person, Mr. K. Govathaman, and their mobile number with their email ID is also available, who take cares for this domain name. So if there is any problem related to the domain name, we can approach to them and their details are publicly available. But if you access this website, you will never find their name or number directly for this particular regard. So hidden information, how can we identify their hidden information? Are you getting my point? So the concern is, no problem. So the concern is, you must figure out, like, if in case
the domain details are not available, at least you can identify their IP addresses. And the IP belongs to whom? The details are publicly available. So understood what is this model all Yes. about? And Yes. even in case if any domain is not accessible right now, if you are not able to access any domain, but still you want to identify the ownership of that domain name, so you can find by using these footprints. So this is the culture of footprinting, which generally hackers or any investigator starts from the beginning. They'll access. We generally used to get the targets like some public IP or some domain names, and further we'll do who is, we'll find their contact details, we'll check their location, their country, their other informations, and accordingly we'll decide what would be the next steps. Sir, I have a hypothetical question, sir. Please. Sir, if the foreign addresses show some different IP addresses which we don't know where it belongs, so by way of this method, we can identify where it belongs and we can start taking legal action. Is this way this is going, sir? See, if the IP belongs to some foreign countries, Yes, sir. right? So, according to the law is only applicable in India. We have an Indian jurisdiction. Correct, sir. So, IP always belongs to, like right now, this IP belongs to India. IGNO IP belongs to India. And if you Correct. have any dispute, any issue, or any conflict related to this IP or this domain name, we can take the support from the legal system, and we can report, and then it is properly being managed with the due diligence steps. But Correct, sir. case if the IP belongs to any foreign country, in that case at least we get the details, we find the details. So our law enforcement always say it is a dead end. Dead end means because the provider belongs to some third party country, we cannot impose Indian laws onto it. But on a special request, like if you remember, there was a one attack. If you remember, just a couple of months before, there was a news in media that there is a bomb in the schools. Okay, sir. Many schools, especially Dwarka schools or some Ghaziabad side schools and all this, especially north in Delhi, north India side, it was one of the big mess, and all schools vacated in the school timings. है So that was a time where that news circulated, and on the media, that there are threatening mails being circulated to various schools, and now we need to investigate. So for the security, for the sake, cops and various schools decided to vacate the schools. They call their parents to please come and collect your child, your children's, right? And finally they try to vacate the schools, and further investigation, bomb squad got into it, scanned the entire school, but there was no bomb as such. But the concern was it becomes a national news, and as it becomes a national news, the investigation started, that was committed by Delhi police, one of the very unique department called IFSO Delhi police. And luckily I was also associated, and I delivered trainings over there a lot, right? So there they got the chance to work on this project. Finally they get into their email IDs, scan their mail IDs from where they received. So all the receiver side, they went to them, they checked their headers of the mails, and they found one IP address. So purpose is to identify always the IP address. Now we did a who is, and we found that IP belongs to some foreign country. Now, as it belongs to a foreign country, so according to Delhi police, it is a dead end, because somebody probably use a VPNs
or really attack being committed, or because it's a matter of national security, national security and sovereignty, and life threatening messages were there. So we have to take it seriously. We got Correct. case, and in such scenario, finally there is a provision in the law. In India, we also have the provision that you can even see, like our prime ministers are always and foreign ministers are moving throughout the globe with the various countries and trying to sign a lot of treaties and a lot of documents with them. So these treaties basically carries one of the very unique document also, which says in case any country, obviously we visited to a particular country, so either India or that particular country required any digital information for any particular IP, so we can request to those countries with their law enforcement, and they will never say no. They will accept it on a first behalf, on the first shot. They will identify their details within their country, collect that information, and we are supposed to share that information with the other countries. But that is the concern taken care by IB, Intelligence Bureau. So in India, we have a IB. So Delhi police forward that case to IB, Intelligence Bureau, that this is the IP we identified from where the threatening mail being circulated, and the IB sent that in report to that specific to their concerned country. That concerned country identify their details, find out that machine. They reach to that machine, investigated that part within the couple of hours. They took almost 2 hours, I believe. But within that time span, they said it was one VPN in that country, nothing else. And from their logs, they identified, because they have the timestamp along with the IP, they found that the request being generated again back from India, and somebody, just to hide their identity, they were using a VPN. And finally the request came back to the IB, obviously circulated through IB to the embassies of Indian embassies in those countries, and those embassies requested. So that's a channel, right? And finally we got a reply, and we found the Indian IP which was hidden behind that foreign IP. And then again investigation started by Delhi police, and they finally reached to that location from where that was circulated. Then we seize those devices, and we find a particular device from where the threatening mail has been it was being composed. Okay, sir. Understood. So possibilities are there to investigate the foreign cases, foreign IP addresses as well. But it depends the the level of priority. It depends whether the sensitivity of the case, like it was the life threatening, it could be considered as a cyber terrorism, right? So such type of cases being handled on a very high priority, and in such cases we have the provision to process. But please take my words, it is very expensive and very time consuming sometimes. So that is why all the cases were not solved like this. We have only priority cases got solved like this way. But generally, in general, for as a public use, generally if you are accessing any data, or you find any IP address which belongs to a foreign IP, then we do not have this approach, we have another approach. Okay, sir. We try to correlate with that IP, we try to connect with that IP, we try to identify the details by using whois and all. We try to request them to send us the detail if possible. Many of them generally share, but many of them not. So depending upon the the behavior, relationships of our country with other those countries, so many things depends, and due to which there is a lack of investigation going across. ये इंडिया का इशू नहीं, ये ग्लोबल इशू है.
Got it, sir. ठीक है, but yes, somehow the things has already been sorted out or priority cases being resolved by these ways. Thank you, sir. Thank you, sir. Clear हो गया कैसे ये जी क्या सर। panel क्या है? This जी is सर। the panel, how it is being performed. Okay, so I think footprinting is clear to all. Can we identify the footprints of any IP address now? Yes, sir. We can, sir. Yes, sir. Wonderful. And you can find the contact details from the back end, that how people are working, and which domain belongs to whom, or which IP being associated to whom. Right? Yes, sir. Yes, sir. Great. Perfect. So quickly, let's talk about another topic of information gathering, that is related to scanning. So that is another part called scanning, which is a port scanning. Now, what are the ports especially? So I'll give you one hypothetical example. Just consider that you are the person appointed for a security job, and there is one big premises, a very big premises. You are alone. You have to secure that premises. And the moment you reach to that premises and you found that there are 65,536 doors are there in that premises, a very big hall, big hall, giant hall sort of, where you found that there are 65,536 doors are there, and all are open. You are alone. Go and secure that premises. So what would be the first plan of action for you? I'm just asking you, take it hypothetically, but just what would be the first plan of action you'll decide to implement the physical security of that premises? First, we'll secure the outer layer, sir, How you'll do that? by identifying how they are faced with each other and what is the physical distance between each doors. Okay. Is it really required? If it has to be physical, then it is required, sir. But digitally, I Okay. don't know, sir. Okay. Come up with more solutions. What is the best practice? You are alone. You have to secure it. That is the purpose. The purpose is to secure that premises where you have 65,536 doors. I'll stand All at the the doors entry are open. point, sir. Yeah, yes, please. I'll stand at the entry point from where the first opening. Very good. So that means you want to stand on the entry point, but the problem is there are 65,536 doors and all the doors are open. So how you will decide where is the entry point? Because you stand on a particular gate, but rest of the gates are open. Nobody will use your gate and they can use some other gate and enter in your premises, access your valuables, and move out from any other gate. So think about a one big hall with 65,536 doors and all are open. So what is the first best practice? Yes, what about others? Can anyone answer this? So we can try to identify which ones are the most vulnerable. Everybody is vulnerable. All the doors are open. भाई आपके घर में कोई फ्रंट गेट, कोई बैक गेट, कुछ ऐसा होगा? आपके कॉलेज में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, या मल्टीपल गेट्स होंगे? कहीं से कोई भी घुस सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. टेक इट लाइक विंडोज ऑल्सो. अगर कोई गेट से नहीं आ रहा है तो हो सकता है somebody jump via window, है ना? So that could be, the size doesn't matter, है ना? Think about rats are coming in your
in your premises, even though you locked everything, so they'd find the space under the door, or they dig a hole and they might get into your premises. So that could be a door. So door means doesn't mean about size. There are 65,536 doors are there, and all are open. Anyone can enter or exit. Sir, can we build a virtual fencing or wall or motion sensor, something हाँ, like that? लेकिन कितना टाइम लगेगा ना? अभी आज सिक्योरिटी लगानी है, आज ही चाहिए। फेंसिंग करने के लिए कितने साल लगाओगे? मतलब कितने महीने का एक प्रोजेक्ट लोगे? आज ही करना है। So what is the best practice? We can think of some closing the door, sir. Then हाँ, अरे सिंपल बोलो ना। आप बड़ी Yes, बड़ी sir. बड़ी बातें सोच गए, सिंपल चीज छोड़ जाते हो। सो साइबर सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक रूल है, पहले सिंपल सिक्योरिटी तो इंप्लीमेंट करो। Correct, sir. That is the biggest flaw. Means from last 30 years I'm implementing security, and take my words, these simple security options, these basic do's and don'ts would help you like anything. बड़े बड़े vulnerability assessment scanners और ये सब फेल हो जाते हैं अगर आपने simple security implement की हुई है तो। Think from the very basic ground and then talk about the high end security level. Correct, sir. Always remember, this is the best practice. तो रियल टाइम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है तो भाई, जैसे मैं कहता हूं आपका मोबाइल है, मैंने मोबाइल हैक करना है। अरे भाई, मैं आपको मोबाइल ही नहीं दूंगा तो मेरा एक्सेस कैसे कर लोगे? मैं इंटरनेट ही बंद कर दूंगा तो कोई कहां से भी कुछ भी एक्सेस हुआ हो, हैक हुआ हो, कुछ एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। इफ आई विल जस्ट स्टॉप माय इंटरनेट, इफ आई विल नॉट शेयर माय डिवाइस टू अदर्स, these are very basic things but very very valuable, very very important. Are you getting my point? तो Yes, sir. सेम केस में भी भाई बड़ा सिंपल है ना स्टेप। द बेस्ट सिंपल स्टेप इज लेट अस गो एंड ब्लॉक ऑल द पोर्ट्स, ऑल द डिवाइस। सारे दरवाजे अंदर से बंद करो ना, बाहर से भी नहीं, अंदर से बंद करेंगे। लेट्स, है ना, क्लोज ऑल द डोर्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, टाइम लगेगा 2 4 5 घंटे जो भी आप लगाएंगे, और Correct. लेट्स say you have whatever the time and as per the area covered and all accordingly, that might be a tedious task, but yes, the best practice is you simply go and block all the doors from inside and only open one door। एक ही डोर खोलो और वहां पे आप खुद खड़े हो जाओ, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, लॉग एनालिसिस, ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, है ना। Correct, sir. ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूजर्स, है ना, एंटर और एग्जिट, we can monitor, we can track, we can have a control on it। किसी भी premises को कंट्रोल करने का बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम सारे सर्विसेज अंदर से बंद कर दें, एक दरवाजा खोलते हैं, वहीं से डेटा आएगा, वहीं से डेटा जाएगा, और उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम मॉनिटर, ट्रैक करेंगे। डोंट यू थिंक सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस? Yes, sir. सिंपलेस्ट Got it, sir. मॉडल, Got it, sir. Now. है ना। लेकिन why I gave you this hypothetical case and why I'm again, you know, emphasizing more about this particular port number, that is 65,536, reason, in every digital gadget, Okay. in every digital gadget, wherever you have a networks, आपका मोबाइल हो, आपका स्मार्ट वॉच हो, आपका स्मार्ट टीवी हो, आपका कोई भी आईओटी गैजेट हो, है ना, आपका सीसीटीवी हो, कोई भी आईटी बेस्ड प्रोडक्ट हो, आजकल तो वो स्मार्ट एसी आ गए हैं एंड ऑल आईओटी डिवाइसेस आ गए हैं, है ना। wherever you have networking, you have Wi-Fi, you have LAN card, you have any network interface, always remember, every default network interface by default have 65,536 ports। 65,536 दरवाजे हैं, पोर्ट्स हैं। जो डोर्स मैं बोल रहा था, बेसिकली दैट इज कॉल्ड पोर्ट। So again, I'll come back with this screen and I want to share again the same screen back to you as I started since morning.
you can see मेरी मशीन का ये पोर्ट नंबर कौन सा है? स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रहा सर, अगेन सर इट फिर से गया क्या? वो अरे फ्रीज हो जाता है सर वो थोड़ी देर बाद सर। हाँ, मुझे कुछ वो लग रहा है, कुछ इश्यूज हैं। नो प्रॉब्लम। Now is it visible? Yes sir. So you can see again the same screen in the morning as I shared. So can you see the colon के बाद port number आ रहा है? Yes sir. Now remember, port number 0 is also working in India in computer science. You know 0 memory location arrays. So 0 is also countable. That means total port starting from 0 till 65,535, not 36. Total is 36. So always 0 is countable. So the total number of ports in every networking device starts from, फिर आपका स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, स्मार्ट वॉच जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, the port number is starting from 0 till 65,535. So in total there are 65,536 ports are there. ठीक है, जहां से डेटा एंटर और एग्जिट होता है, जहां से डेटा एंटर और एग्जिट होता है. सो दीज आर द सॉकेट्स. दीज, इसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग भी करते हैं. आप नेटवर्किंग में सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हो बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, यू कैन डिफाइन योर ओन. ट्रोजन्स काम कैसे करते हैं? डेटा इज मूविंग वाया सॉकेट्स, वाया पोर्ट्स. तो कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है तो डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है. जो डेटा आ रहा है या जा रहा है, if you are receiving certain data packets or transmitting certain data packets, that is always via port numbers. So we need to find out how many ports are open in my machine, or by using netstat we need to check the port numbers as well. So please note down, initial 1024 ports called as the default ports, and rest all the ports called as a random port numbers. इनिशियल 1024 पोर्ट्स, हालांकि अभी रेंज बढ़ चुकी है, बट जो जर्नली बुक्स में लिखा है, आई एम जस्ट सेइंग दैट 1024 initial 1024 port numbers are associated with the well renowned services called as default ports, where the rest of the ports are called as random ports, generally deployed or accessed by the clients. तो सर्वर साइड्स पे जो मोस्टली पोर्ट्स आपको मिलेंगे कौन से हैं? कॉमन पोर्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज. सो प्लीज नोट डाउन दोस पोर्ट्स क्विकली. पोर्ट नंबर 21 लिखिए फटाफट, ये याद होनी चाहिए. पोर्ट नंबर 21 किसके लिए होता है? दैट इज फॉर एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स. सो सर्वर पे पोर्ट नंबर 21 खुला होगा, क्लाइंट पे नहीं. क्लाइंट पे रैंडमली कोई भी पोर्ट हो सकता है, 65,536 में से कोई भी एक पोर्ट होगा. और क्लाइंट के भी ऊपर पोर्ट खुलेगा, सर्वर का भी पोर्ट खुलेगा, तभी तो डेटा एक डोर से निकल के दूसरे डोर में घुसेगा ना. करेक्ट सर. सो देयर आर सर्टेन पोर्ट्स. Your client side you have a random port, but on the server side you have a fixed port, specific ports for the specific protocols or services. So port number 21 FTP, port number 22 लिखते जाइए फटाफट. ये एग्जाम्स में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स में भी आपसे मांगा जाता है. ठीक है, एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स में भी आपसे मांगा जाता है. पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 22 इज फॉर SSH, सिक्योर शेल. पोर्ट नंबर 23 फॉर टेलनेट सर्वर्स. टेलनेट में डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था. पुराने राउटर्स में आज भी लोग टेलनेट से ही कनेक्टिविटी करते हैं. कमांड्स रन करना है, राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो टेलनेट यूज होता है. ठीक है, और SSH होता है जनरली क्लाउड सर्वर्स, लिनक्स सर्वर्स को रिमोटली हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो वी यूज SSH सर्विसेज. नेक्स्ट, पोर्ट नंबर 25, दैट इज
that is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, port number 25, SMTP, port number 53 for DNS servers. तो अभी तुषार सर मॉर्निंग में पूछ रहे थे ना डीएनएस क्या होता है, अब ये आप यही नहीं बताओगे, अब आगे से आप टेक्निकल और डिटेल में बताओगे सर पोर्ट नंबर 53 फॉर डीएनएस सर्वर्स। ठीक है, तो जो डोमेन नेम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जहां से आप डोमेन नेम की डिटेल्स को आइडेंटिफाई करते हो और अगर किसी को डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो बाय डिफॉल्ट उसका पोर्ट नंबर 53 होगा। ऐसे ही कोई वेब सर्वर होगा HTTP वेब सर्वर, so if there is a web server then in that case the port number is 80 for HTTP protocol, port number 80। HTTPS अभी बताया था कौन सा HTTPS का पोर्ट नंबर 242 सर से। अरे नहीं भाई, HTTPS का 443 सॉरी सर। हाँ, अभी तो ये देखो ना सामने ही खुली हुई है स्क्रीन पे भी 443, दैट इज HTTPS। तो HTTP का पोर्ट नंबर 80, HTTPS का 443। आगे लिखो ऐसे ही POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज द वर्जन। ये ईमेल रिसीव करने के लिए सर्वर प्रोटोकॉल्स अलग हैं, ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हैं। तो ईमेल सेंड करते हैं तो SMTP का पोर्ट नंबर 65 सॉरी आपको बताया 25 सर है ना, और मेल रिसीव करनी है तो POP3 110 110। ऐसे ही एक और प्रोटोकॉल है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 143। इन्हीं का अगर इसको SSL के साथ जोड़ दें, यानी अगर हम इन्हीं पोर्ट्स को जैसे SMTP था 25, अब SMTPS बना दें, यानी SSL लेयर को जोड़ दें, सिक्योर सॉकेट लेयर को जोड़ दें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स में। जो हमारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स थे, जैसे मैंने 7th लेयर का OSI में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बताया, HTTP का HTTPS हो गया, ऐसे ही SMTP का SMTPS, FTP का FTPS। तो अगर आप विद SSL जोड़ते हो तो SMTP को जब SSL के साथ जोड़ा जाता है तो पोर्ट नंबर होता है 465, SMTPS पोर्ट नंबर 465। SMTPS विद TLS जोड़ दिया जाए, एंड टू एंड इंक्रिप्शंस को और हाई इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स पे ले जाएं तो पोर्ट नंबर हो जाता है 587। सर लास्ट के दो रिपीट करेंगे क्या सर एक बार वो? हाँ, SMTPS का पोर्ट नंबर है 465, जो केवल SSL को इंप्लीमेंट करता है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स पे जैसे HTTP था तो HTTP का बन गया ना HTTPS। यस सर। ऐसे ही SMTP था तो SMTP का बन गया SMTPS। यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पे जब हम SSL लेयर को जोड़ देते हैं, डेटा इंक्रिप्शन लेयर पे ले आते हैं, SSL को लाते हैं, तो इन दैट केस SSL जो है वो एक अलग पोर्ट ओपन करवाता है। तो SMTP विद SSL अगर होगा तो पोर्ट नंबर होगा 465। करेक्ट सर। अब और एडवांस में जाते हैं, SSL का वर्जन आ गया है लेटेस्ट 3.0। सो दैट 3.0 इज मोर सिक्योर बिकॉज SSL में ना सेशन हाईजैकिंग हो जाता था। सेशन हाईजैकिंग को भी मिटिगेट कर दिया गया वाया TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को और ऐड कर दो, यानी चौथे लेयर को भी मर्ज कर दिया जाता है OSI के साथ। तो हम ये बोलते हैं SMTP with SSL with TLS, that is equals to port number 587। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना सभी? गॉट इट सर। SMPT प्लस SSL 3 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। ठीक है सर, प्लस SSL प्लस TSL इज द पोर्ट 587 सर। परफेक्ट, 587। ठीक है जी। जी सर। ऐसे ही अब मेल रिसीव करनी है, ये तो थे मेल सेंड करने के पोर्ट्स, 3 पोर्ट बता दिए मेल सेंड करने के, SMTP विद SSL, SMTP विद SSL विद TLS, तो 3 अलग पोर्ट हो गए। 25, 465, 587 मेल भेजने के लिए, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन प्रोवाइडर।
ऐसे मेल रिसीव करने के लिए लिखिए, जैसे POP3 मैंने बताया, POP3 का 110 पोर्ट नंबर है, तो POP3S लगा देंगे तो उसका पोर्ट नंबर है 995, उसका पोर्ट नंबर है 995। ऐसे ही मैंने एक और पोर्ट प्रोटोकॉल बताया IMAP का पोर्ट नंबर मैंने बताया 143, तो IMAP को IMAP-S लगा देंगे तो पोर्ट नंबर उसके लिए चाहिए 993। इसी तरीके से अब अगर आप कोई डेटाबेस सर्वर लाइक MySQL सर्वर लगाते हो, अब उसका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है 3306। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, फॉर मोर डिटेल्स, ऐसा नहीं है, आप सिंपल कर भी सकते हो, गूगल पे जाइए और लिखिए पोर्ट लिस्ट, ओके, सिंपल पोर्ट लिस्ट, पूरी की पूरी पोर्ट लिस्ट मिल जाएगी आपको कि कौन से पोर्ट्स हैं और ये कॉमन पोर्ट्स कौन से हैं। अगर आप गूगल करेंगे, ये देखिए विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा TCP UDP के पोर्ट्स कौन से होते हैं। अदरवाइज ये इमेज मिल जाएगी एक बढ़िया सी, कहीं पे ये मैंने इमेज देखी थी, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें ना पूरे 65,536 पोर्ट्स पे क्या क्या चल रहा है। इवन आप ये भी लिख सकते हो इसके साथ, ट्रोजन पोर्ट लिस्ट लिख दोगे तो हर पोर्ट नंबर के लिए मार्केट में एक नया ट्रोजन बना है, हैकिंग करने के लिए ट्रोजन बना है, तो कौन से नाम के ट्रोजन कौन से पोर्ट पे काम करते थे उसकी भी लिस्ट मिल जाती है गूगल पे। तो देखिए ना, काम तो वो होना कनेक्टिविटी है ना, अल्टीमेटली तो नेटवर्क्स है ना सब कुछ, बैकबोन में कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए कर रहे हो, या हैकिंग करने के लिए कर रहे हो, दैट इज योर इंटेंशन। Rest, all the services are same and common and easy to go. Is that clear to all? यस सर। Perfect. तो आपको पोर्ट स्कैनिंग करनी है, पोर्ट्स की लिस्ट निकालनी है, यू नीड टू फिगर आउट द लिस्ट ऑफ द पोर्ट्स और चेक करना है आज आपकी मशीन में कौन सा पोर्ट खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए, बैकडोर कोई चला तो नहीं हुआ कहीं, कोई आपकी मशीन में, चाहे आपने एंटीवायरस डाले हो 1000, लेकिन फिर भी अगर कोई मैलवेयर है पीछे, कोई ट्रोजन है पीछे। अब देखिए समझे, जब मैलवेयर का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक छोटी सी लाइन बता देता हूं, एंटीवायरस केवल वायरस को रोकेगा और हजारों अलग तरह के मैलवेयर्स हैं, सभी मैलवेयर्स को एंटीवायरस नहीं रोकेगा। क्लियर है ना, वायरस है तो उसको रोकने के लिए एंटीवायरस है, तो ट्रोजन्स हैं तो ट्रोजन्स को रोकने के लिए एंटी ट्रोजन्स होने चाहिए ना, है ना, वॉर्म्स हैं तो वॉर्म्स को रोकने के लिए एंटी वॉर्म्स होने चाहिए, रूट किट्स हैं तो उनको रोकने के लिए एंटी रूट किट्स होने चाहिए, रैंसमवेयर है तो उनको रोकने के लिए एंटी रैंसमवेयर होने चाहिए। तो मैलवेयर की जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैलवेयर के अंदर मैं पूरी आपको डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सी चीज के लिए कौन सा एंटीडोज। भाई बुखार होता है तो पेट दर्द की दवाई थोड़ी लेते हो, है ना, अगर आपको पेन है तो शुगर की दवाई थोड़ी ले लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम थिंग, जो प्रॉब्लम है उसकी वही तो एंटीडोज लोगे ना। लेकिन कंप्यूटर्स में लोग क्या कहते हैं, भैया एंटीवायरस खरीद लो, और वो केवल वायरस को ही रोकता है, बाकी मैलवेयर को कौन रोकेगा। तो अगर आपकी मशीन्स में कहीं आपने सिंपल एंटीवायरस खरीद रखा है, दैट इज गुड फॉर नथिंग, बिकॉज in case if there is a Trojan or if there is any backdoor open and running as an application or it's a legitimate application, then it works fine and your antivirus never stops that. But that is the way how hackers are still hacking your data, processing your data, collect your data and move out. तो डेटा लाएंगे या ले जाएंगे कहां से? आपके घर पे कोई घुसेगा, है ना, चोरी करने के लिए अगर कोई घुस रहा है तो उसको रोकने के लिए वनरेबल एरियाज होंगे ना, यस सर। ओपन डोर्स होंगे ना। तो अगर हमें वो पता हो कि हमारे घर में कौन से और कितने ओपन डोर्स हैं, कैन वी स्कैन इट, कैन वी go for it, because now we have 65,536 ports. So the best practice is you can go to Google and आप लोग कोई डाउनलोड कर सकते हैं पोर्ट स्कैनर, एडवांस पोर्ट स्कैनर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप ट्राई कर सकते हैं गूगल पे,
या सेकंड एक और सॉफ्टवेयर का नाम लिख लीजिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो है ZenMap, ZENMAP। एक ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये गूगल ट्राई करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, ZenMap वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर आपके प्रैक्टिकल्स में मतलब 10 बार आएगा। इस सेमेस्टर में भी आएगा, अगले सेमेस्टर भी आएगा, अगले साल भी आएगा। जब भी साइबर सिक्योरिटी में बैठोगे तब ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सो द बेस्ट प्रैक्टिस आपको आज और अभी और इसके बाद शाम की भी एक क्लास है, उसमें भी आपको प्रैक्टिस ये करना है। ZenMap डाल लो। ये देखिए मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये फ्रीज हो गया सर स्क्रीन फिर से। नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी सर। मैं आपको, मेरी मशीन में ऑलरेडी डला हुआ है। मैं कमांड लाइन वाला यूज करता हूँ क्योंकि मैं लिनक्स पे हूँ। आप विंडोज पे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ZenMap यूज करिए, वो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, विंडोज में डल जाता है। ठीक है, तो आपको लेना है ZENMAP, ZenMap फॉर विंडोज। आप वो डाउनलोड कर लें तो आपका मैक्सिमम काम सॉल्व हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस तो सर। अब आपको क्या करना होता है, मेरे को चेक करना है मेरी मशीन में कितने दरवाजे खुले हैं। मैं कैसे चेक करूं? तो सिंपल है, हम लिखते हैं nmap लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब मेरी मशीन। यहाँ आप अपना आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, यहाँ तक कि लैन में किसी और कंप्यूटर का आईपी भी डाल सकते हो। किसी भी डोमेन नेम का नेम भी लिख सकते हो चेक करने के लिए कि उस डोमेन पे, उस आईपी पे, लैन में या इंटरनेट पे। बट आई रेकमेंड डू नॉट रन दिस कमांड ऑन इंटरनेट फॉर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। ठीक है, अपने लैन में अपनी टेस्टिंग के लिए, वनरेबिलिटी असेसमेंट के लिए ये कमांड जरूर करें, प्रैक्टिकली जरूर करें। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर नॉट सपोज टू रन द सेम कमांड ऑन एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स विदाउट देयर परमिशन। मतलब पता क्या होगा, ये देखिए मैंने रन किया तो प्रेजेंटली मेरी मशीन में क्या क्या चल रहा है आप चेक कर सकते हैं। मैंने लिखा लोकल होस्ट मेरी मशीन को स्कैन करे तो ये बता रहा है मेरी मशीन में पोर्ट नंबर 22 ओपन है। 22 किसके लिए होता है? SSH सर्वर, मैंने बताया था ना। पोर्ट नंबर 80, मेरी मशीन वेब सर्वर भी है, सो इसमें वेब सर्वर रनिंग है एक, तो HTTP पोर्ट नंबर खुला हुआ है। ये लिनक्स बेस्ड है, ये प्रिंटिंग सर्विसेज चलती हैं पोर्ट नंबर 631 पे। मेरी मशीन में MySQL सर्वर डाला हुआ है तो पोर्ट नंबर देखो 3306 ओपन है। मेरी मशीन में मैंने टॉर अनियन राउटिंग डाल रखी है, तो टॉर बैकडोर में कौन सा पोर्ट यूज करते हैं TCP का? 9040 9050। टॉर सॉकेट्स और टॉर डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये पोर्ट यूज करते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी मशीन में कौन से मैंने दरवाजे खोल रखे हैं। अगर आपको पता चल गया और कोई अननोन पोर्ट मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है ये अननोन है, तो आप ये सर्विसेज को बंद कर दीजिए। देन विल टॉक अबाउट हाउ टू क्लोज द पोर्ट। कोई अनोनिमस पोर्ट मेरी मशीन में ओपन है, so first you need to diagnose, you need to find out, identify the vulnerabilities in your device. You need to find the list of the ports which are intentionally or unintentionally open on the back door, and find those ports and decide what you need to do. You need to block those ports, so block those services, or you want to keep it open. Make sure whatever the data being transferred via these ports has to be monitored, tracked, under surveillance. We need a lot of third party tools to identify their behavior. एंड सर विंडो के लिए आपने सजेस्ट किया जैन मैप फॉर विंडो या सॉफ्टवेयर रन करें तो सेम थिंग विल हैव जो हाँ, आपने वो nmap का ही ग्राफिकल वर्जन है। वो ओके सर। इसी टूल का ग्राफिकल वर्जन है ZenMap, ओके सर। है ना? वो ग्राफिकल वर्जन है इसी का ही, सेम इसी चीज का, कुछ अलग नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज आपका आफ्टरनून सेशन जो है उसमें भी आप लोग यही प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अपना पोर्ट स्कैनिंग कीजिए। अब एक चीज सोचिए ना, मैंने क्यों बोला थर्ड पार्टी वेबसाइट को मत करना? अरे भाई, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकली, मैं सीधा आज आपसे कहता हूँ सर भाई आप आज मैं आप लोगों के घर आ रहा हूँ, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के सीधा मैं आपके घर आ गया, और घर आके बाहर आके, है ना, ठोक ठोक के देख रहा हूँ, पत्थर मार के देख रहा हूँ ये दरवाजा कितना मजबूत है, खिड़की पे पत्थर मार के देखता हूँ कि भैया खिड़की का शीशा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वनरेबल है या नहीं, है ना, हिट कर करके देखूंगा तो आप कहोगे अरे भैया कौन आ गया और घर में क्यों ऐसे हरकतें कर रहा है बिना हमसे पूछे।
कहोगे ना, है ना, कि कोई आउटसाइडर, है ना, एनोनिमस यूजर विल स्कैन योर पोर्ट्स, स्कैन योर डोर्स, दरवाजे, वनरेबिलिटीज मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो आप तो सीधा पुलिस को बुलाओगे ना कि ये देखो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है कोई, है ना। तो अगर आप भी यहाँ बैठे किसी और के थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे अटैक करोगे और उनके पास इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, तो उनके पास आपका आईपी एड्रेस की लिस्ट चली जाएगी एंड दे माइट कंप्लेन ऑन दैट, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जाएगा ना, आपके आईपी एड्रेस हिट कर रहा है उनके सारे दरवाजों पे, सारे पोर्ट्स पे। भाई क्यों कर रहे हो, किसने आपको परमिशन दी? तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोग जाते हैं और ऑडिट करते हैं, तो उनसे पहले रिटर्न परमिशंस लेते हैं इस चीज की, कि दे आर सपोज टू गिव अस द परमिशन सो दैट वी कैन एबल टू स्कैन देयर पोर्ट्स एंड ऑल द टूल्स विच वी वांट टू रन for the betterment of the vulnerability scannings and for the betterment of that organization. And in case, अब कई बार ऐसे होते हैं कुछ वनरेबल पोर्ट होते हैं, कई बार होता है ना, आपने दरवाजा खोला, वो दरवाजा ही हाथ में आ गया, अरे भैया हमने थोड़ी तोड़ा था दरवाजा, वो पहले ही टूटा होगा, लेकिन हमने खोला तो पता चले वो पहले से ही कुछ और प्रॉब्लम थी। तो सेम वे, आपने किसी पोर्ट पे हिट करा तो पता चला उनका पीसी क्रैश हो गया, हैंग हो गया, चोक हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या कुछ भी ऐसा ऐसा एक्टिविटीज हो सकती हैं। जनरली हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होती, बट यस सर्विसेज आर देयर, सो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दो सर्विसेज दैट माइट बी कंसिडर एज एन अटैक। हमें नहीं पता ना दूसरे के सर्वर में क्या चल रहा है, हम तो सिर्फ पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, है ना। तो हम तो पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, लेकिन उन पोर्ट्स में उनकी सर्विसेज पे उनका कितना फ्लो ऑफ डेटा है, क्या ट्रैफिक है, कहीं हो सकता है उन पोर्ट्स पे किसी ने पहले से डॉस डीडॉस अटैक्स लगाए हों, तो ऐसे में आपका आईपी एड्रेस भी लिस्टेड हो जाता है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड, you are not supposed to scan the ports of third party websites where you do not have the written permission. But at the same time, you are the owner of your organization, you are the owner of your machine, you are the owner of or IT admin of your network. It is mandatory for you to do these kind of exercise frequently. Frequently matlab depending upon the size of the network and the resources, कई बार तो हम वीकली, फोर्थनाइटली, मंथली स्कैनिंग की सजेशन देते हैं, ओपिनियन देते हैं हम लोग। और टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड ही तो लगता है, बट फॉर एवरी मशीन यू हैव टू जनरेट अ रिपोर्ट एंड कीप दोज रिपोर्ट, बिकॉज इन केस एनी टाइम इफ योर मशीन गॉट कॉम्प्रोमाइज बाय सम थर्ड पार्टी बैकडोर, बिना किसी एंटी टूल के, कोई परचेज करने के, कांट वी स्कैन, कांट वी चेक what is there as a backdoor in my machine or in my network? If I want to scan it, we have to go through with the port scanner. I hope you got my point, what I'm saying. Yes, sir. है ना। लेकिन अगर आपकी मशीन में कोई पहले से ही कोई एंटीवायरस या वो सब कुछ विंडोज में डला होगा, तो मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। आप लोग अपनी मशीन में ना एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाल के उसमें एक नेस्टेड विंडो बना लें। वर्चुअल मशीन में एक विंडोज बना लीजिए, ताकि ऐसे सारे टूल्स आप उसमें प्रैक्टिस करें। बेस मशीन में कई बार मैंने देखा, जैसे एक मशीन में मैं देख रहा था, एडवांस पोर्ट स्कैनर को डाउनलोड करा, वो कहता है इसमें तो वायरस है, मैं चलने ही नहीं दूंगा। तो विंडोज की सिक्योरिटी लगी हुई थी, और विंडोज की बेसिक सिक्योरिटी आपको ये टूल्स ही नहीं चलाने देगी, तब क्या करोगे, है ना। तो मतलब या तो विंडोज की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, और या प्रैक्टिस छोड़ दो भाई क्योंकि सिक्योरिटी जरूरी है, डेटा सिक्योर्ड है मेरा। सो आई रेकमेंड, डू नॉट यूज द हैकिंग टूल्स on your working computers, working laptops or computers or servers. What is the best practice? At least you make a one isolated environment, or take a separate machine, right, or make a isolated environment in a virtual machine. ये देखिए मेरी मशीन में, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, एक बार स्टॉप कर ही देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, आपको लगेगा कि मेरी मशीन, मैंने बेस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का डाला हुआ है। I'll just show you my machine. उसका रीजन क्या है,
And do you know we are the India's first company. We designed the Indian operating system, and with the name called Security Operating System, and I filed the patent in 2011. मैंने 2011 में तो पेटेंट डाल दिया था। ये हमारा इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा लिनक्स चल रहा है एज अ बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हमें भी तो विंडोज की एक्सरसाइज करनी होती है। सो आई गो टू द न्यू एरिया एंड वेयर आई यूज अ वन ओपन सोर्स एप्लीकेशन कॉल्ड Oracle वर्चुअल बॉक्स। ये आप लोग यूज कर सकते हो। Oracle वर्चुअल बॉक्स इज कंपैटिबल विद योर मैक ओएस, विंडोज ओएस एंड एवरीवेयर। और इसमें आप देख रहे हो आई हैव Oracle वर्चुअल बॉक्स एंड आई हैव आइसोलेटेड एनवायरनमेंट इन माय मशीन। आई हैव विंडोज 11, आई हैव विंडोज 10, आई हैव विंडोज 7। ऐसे मेरे पास बहुत सारे, कम से कम 8-10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखे हुए हैं मैंने फॉर टेस्टिंग एंड फॉर एज पर द कंसर्न। मुझे विंडोज में कहीं मैलवेयर एनालिसिस करना है तो मेरी विंडोज ही अलग है ना। विंडोज 11 पे टेस्टिंग करनी है वो अलग है। पुराना आज भी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है विंडोज 7। So there are various different resources by which you are supposed to run all these applications on the various different platform. एक Windows 11 नीचे भी है, Ubuntu है मेरे पास, हमारा Forensics Edition है, Windows with Office 2021 है। The screen आपका freeze हो गया on the main page only where operating system page is हाँ, required. तो वही मैं दिखा रहा हूँ अभी। और कुछ अच्छा ये मेन पे ही है। अरे यार ये बार ये काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यू आर सपोज टू डाउनलोड, ये एक प्रैक्टिस कर लीजिए आज, अगर आप कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। उसके लिए एक बार यूट्यूब वगैरह वीडियो देख लेना। ये देखिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, Yes sir. बॉक्स। और Yes. वर्चुअल बॉक्स में ये देख रहे हो मेरे पास अलग से विंडोज 11 है, विंडोज मैलवेयर एनालिसिस का विंडोज ही अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। विंडोज 7 है, मेरे अलग अलग वर्जन के शेड्यूलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे पास यूबुंटू का एक बिग डेटा का है एंड फॉरेंसिक्स एडिशन, विंडो यूबुंटू का एक अलग सर्वर है। तो आई हैव वेरियस मशीन्स, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर टेस्टिंग एंड फॉर वेरियस डिफरेंट परफॉर्मेंसेस। तो आई रेकमेंड, अगर आपका विंडोज 10 या विंडोज 11 है बाय डिफॉल्ट, आप उसमें एक Oracle वर्चुअल बॉक्स डालिए और एक और विंडोज ओरिजिनल ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज 11 की ISO फाइल डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर। ऑफिशियल लेना, थर्ड पार्टी नहीं लेना, क्रैक्स नहीं लेने, टेक द ऑफिशियल वन, ठीक है। एंड यू कैन इंस्टॉल विंडोज इन योर मशीन, राइट। एंड वंस यू इंस्टॉल योर विंडोज इन योर मशीन एज एन अ वर्चुअल बॉक्स, इसके अंदर आप जाके जेन मैप डालो या और हजारों सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा, आप वो सब डालते जाओ और कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली काम करेगा। इससे आपका बेस मशीन भी सिक्योर रहेगा और एक टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग लैब के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाएगा और सेम लैपटॉप में ही काम कर रहा होगा। सो टुडे योर जॉब इज टू मेक अ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट इन योर मशीन, यूज Oracle वर्चुअल बॉक्स, या कुछ लोग VMware वर्कस्टेशंस यूज करते हैं। VMware एक पेड प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोप्राइटरी है, तो मैं वो जनरली यूज नहीं करता। Oracle का प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है, GPL है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और विंडोज ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज 11 ISO आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लीजिए कैसे आप Oracle वर्चुअल बॉक्स में विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। या विंडोज 7, विंडोज 10, जो भी आपके पास ISOs हो आप वो डाल सकते हैं। और उसके बाद उस ISO को जब चला लेंगे अच्छे से, डालने के बाद फिर आप ZenMap या अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए जिसमें बहुत सारे टूल्स डलेंगे, है ना। जैसे जैसे हम टूल डालते जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे इजीली, ठीक है सर। ठीक है ना। तो अपनी पहले आज आपका काम यही है, दिन में ये वाला मैंने पार्ट करा दिया और आफ्टरनून में भी आपको यही चीज करनी है। मैं आपसे कनेक्ट तो रहूंगा, लेकिन आफ्टरनून में जो आपका एक और बैच है, हमारा आज शाम का भी है, उसके अंदर आपको सिर्फ Oracle वर्चुअल बॉक्स में अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देखिए डाउनलोड के लिए साइज बहुत बड़ा होगा, इंटरनेट अच्छा चाहिए होगा, मोबाइल के इंटरनेट से काम नहीं चलेगा, वाईफाई वाला चाहिए होगा। अगर विंडोज 7 की या विंडोज 11 की ISO आप डाउनलोड करेंगे, मुझे लगता है मैंने जब करी थी तब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे कोई 5.5 GB की थी,
अभी लास्ट मैंने कुछ दिन पहले देखा वो 7.5 GB की दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है 7.5 GB की। आप एक वो फाइल डाउनलोड करेंगे, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड, मतलब आज 10 GB लगने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टाइम टू परफॉर्म। तो आज पूरा दिन ले लीजिए आराम से, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार वीडियो देख लें हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं कनेक्ट रहूंगा। लेकिन आप लोग अपनी मशीन्स को शेयर करना। मैं बोलता हूं अगर हमें ये परमिशन मिल जाएगी तो आप अपनी मशीन शेयर करना, हम उस पर चेक करके मैं प्रैक्टिकली दिखाता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इवनिंग में, आज आप लोगों ने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डालना है, विंडोज 11 डालना है, और कुछ अगर एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं, तो भाई आप लोग साथ में यूबुंटू भी डाल सकते हो ना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। तो एक यूबुंटू भी डाल लो, यानी एक लिनक्स भी आ जाएगा, एक विंडोज भी आ जाएगा। आपकी सारी प्रैक्टिस किसी भी हाल में, कैसा भी कोई भी एप्लीकेशन रहे, सब चलेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार वो विंडोज पे चलता नहीं है, वो लिनक्स पे चलता है, या लिनक्स में नहीं चल रहा है, विंडोज में चल रहा है। आप किसी भी तरह की ये टेस्टिंग लैब्स तैयार हो जाएंगे आपकी, और उसमें आप कैसे भी टूल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ लोग प्रेफर करते हैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग में, तो उसका भी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की बनी बनाई इमेज आती है, आप वो भी ट्राई करना चाहो, लेकिन बाद में करेंगे, अभी एटलीस्ट यू स्टार्ट विद दिस बेसिक थिंग, एंड आई थिंक यू विल बी थ्रू विद दैट पार्ट। क्लियर हो गया सभी को? जी सर। कोई डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट विद एनीवन? So No today, sir, we'll try to do whatever we'll do is it, restricted. and today we'll connect and we'll see whether you have implemented and you prepared your machines accordingly. And once it is done, we'll do these practicals, और उसके ऊपर अपनी अपनी एक्सरसाइज जो आज मैंने ये पढ़ा है ये भी कर लीजिए अच्छे से, और मीनवाइल अपनी मशीन्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड में मेमोरी लगेगी ज़रूर, और बैंडविड्थ यूज़ होगी आज, तो प्लीज़ मेक श्योर अपना प्लान आपका जो भी है इंटरनेट का चेक कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। परफेक्ट, सो ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? ये आप एक बार ना मेरिट में जो सर है ना उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। आई थिंक दे आर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इन केस इफ इट इज विजिबल दे विल प्रोवाइड यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। इज देयर एनी क्वेश्चन विद एनीवन? Yes sir, I have one question. Can we if we forget the password of Kali Linux, can we retrieve the password? Certainly. So can you please show us that how can we do that, because I'm facing the same problem right now. करवा दूंगा, डोंट वरी। लिनक्स में पासवर्ड हैक होते हैं, विंडोज में पासवर्ड हैक होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, Okay sir. है ना। बट that is more related to hacking, but I'll give you the way how it works, don't worry. Okay sir. No. Okay. Thank you. Any other query? Not now sir, if we'll have doubt we'll come to you sir. Perfect. So Thank please, you so much, for sir. today you're supposed to do as I gave you the assignment, so make your isolated environment accordingly. All the best, see you, bye bye, take care. Thank you so much sir, thank you so much. Thank you.